गुड इवनिंग वन एंड ऑल। क्या आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया उसका रिवीजन किया स्टूडेंट्स? बिकॉज द टॉपिक आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, बट उसी के साथ वो थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद एक बार अपनी तरफ से उसे पढ़ें, लॉ का लैंग्वेज पढ़ें, जो रूल्स के लैंग्वेज है वो पढ़ें, सो दैट आपको उसका बहुत इन डेप्थ और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। प्लस उसमें जो भी आपके क्वेरीज हो, डाउट्स हो, वो हम एड्रेस करें। So I'll just brief you हमने last session में क्या डिस्कस किया। In the last session we discussed the reversal required as per section 17(1) read with section 17(2). 17(1) कहता है जहां पे आपका बिजनेस के अलावा बाकी अदर देन बिजनेस यानी नॉन बिजनेस सप्लाई है तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। 17(2) says wherever there is taxable as well as exempt outward supply, in that case also you have to do proportionate reversal. Now, in that particular scenario, we came to rule number 42 and 43. Rule 42 deals with reversal for your inputs, input service जो monthly आपको आते रहता है, and 43 deals with reversal for ITC that you have taken on capital goods. 42 जो कि इनपुट और इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड है, says that कि whatever input comes to you आपको उसको रिवर्स करना है in a particular ratio, मगर आपको रिवर्स करना है only the common credits. Now, for reaching the common credits, you have to first exclude from your total ITC one ITC which is relating to exempt supplies. Second, ITC which is completely blocked under section 17(5). Third, ITC which is ineligible, and one more ITC which is fully eligible because it is relating to taxable supplies. ये सब रिमूव करने के बाद जो बैलेंस बचता है दैट इज योर कॉमन आईटीसी। उस कॉमन आईटीसी को वी अप्लाई द फॉर्मूला विच इज न्यूमरेटर में एग्जाम सप्लाई, डिनोमिनेटर में टोटल सप्लाई। सो यू गेट द प्रपोर्शनेट अमाउंट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई आउट ऑफ कॉमन आईटीसी। और फिर जो आपका कॉमन आईटीसी है माइनस ये जो आपने प्रोपोर्शनेट निकाला टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, द बैलेंस कॉमन आईटीसी इज टुवर्ड्स द टैक्सेबल सप्लाई। दिस कॉमन आईटीसी टुवर्ड्स टैक्सेबल सप्लाई प्लस जो हमने एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल आउटवर्ड के लिए आईटीसी को एक बार माइनस किया था, ये दोनों आईटीसी इज द एलिजिबल आईटीसी। बाकी सब आपको रिवर्स करना है। दैट इज रूल 42। 43 डीलिंग विद कैपिटल गुड्स सेज अगेन कैपिटल गुड्स विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर exempt will be removed क्योंकि उसका आपको आईटीसी मिलना नहीं है। अगेन कैपिटल गुड्स विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल एक बार उसे भी हटा दीजिए क्योंकि वो पूरा मिलना है। ओनली कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड कॉमनली फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज take those capital goods ITC divided by 6060. 60 is the total life of the asset expressed in months. The life is 5 years. 5 years converted into months would be 6060. So when you divide this ITC of that capital asset by 6060, you get approximately per month ITC. वैसे ही जितने भी अलग अलग कैपिटल असेट्स होंगे विच फॉल्स इन दिस कॉमन कैटेगरी, सबका पर मंथ आईटीसी आप ऐड करेंगे। दिस विल बिकम योर टोटल पर मंथ आईटीसी ऑफ कॉमन कैपिटल गुड्स मल्टीप्लाइड बाय द exempt supply divided by the total supply. Same formula. You get the proportionate ITC attributable to exempt supplies. This amount of ITC, capital goods ka ITC, which is attributable to exempt supply, you will reverse month on month. So this is what is given in rule 43. Hemant has put a question. Sir, is the tax period in GST a month or a quarter? Does it depends on the convenience of the taxpayer when this tax period is declared by the taxpayer? Very good. See, आपको इसका जो प्रॉपर डिटेल्ड आंसर है वो आगे वाले चैप्टर में आएगा ही व्हेन वी गो टू रिकॉर्ड्स रिटर्न्स। बट स्टिल सिंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इज वेदर रिटर्न फाइलिंग इज मंथली और क्वार्टरली अंडर जीएसटी। आंसर इज इफ यू आर अ स्मॉल टैक्स पेयर, योर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स द क्राइटेरिया गिवन, यू फॉल अंडर द क्वार्टरली फाइलिंग। अगर आपका टर्नओवर उस क्राइटेरिया को एक्सीड करता है, यू फॉल अंडर द मंथली फाइलिंग। Where you are in the quarterly filing, you always have an option ki you want to be quarterly filer or you can switch to the monthly filer. But this is allowed only when you are in the quarterly filer category.
So Hemant, I hope I have answered your question. So that will be your tax period. So it could be monthly if your turnover exceeds the specified limit, or else it is quarterly, where you have a choice to convert into monthly also. Now this is the working of capital goods proportionate reversal. Students, anybody has any questions in any of these points? Students, anybody, any questions? No questions? Okay, Hemant is saying no. What about others? Have you all actually studied, which you all were supposed to, and which actually I expected that you all study, so that you could come with your first-hand questions? Yes, Mansha, Mitali, Ginny. बच्चों, आप लोगों ने नहीं पढ़ा शायद. यस. सर मेरे मैसेजेस आपको पहुंच नहीं रहे क्या? ओ सॉरी, मैं अशोक सर को सॉरी सॉरी। हाँ बेटा, नहीं अभी तक तो आपका कोई भी नहीं आया. नहीं सर, एक्चुअली वो अशोक सर को जा रहे हैं मेरे सारे हाँ मैसेजेस। कोई बात नहीं, आपको चेंज कर लो. ठीक है. वो लगा ही मुझे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ही नहीं कि मैंने आपको एक बार में एक्सप्लेन कर दिया और आपको कोई डाउट ना आए. सो इफ यू आर नॉट आस्किंग द डाउट्स, इट मीन्स यू ऑल हैव आल्सो नॉट स्टडीड. ठीक है स्टूडेंट्स, एनीवेज आई विल प्रोसीड, बट आई विल रिक्वेस्ट दैट यू ऑल डू दिस today itself, so that in next lecture you all will come with the doubts, right? So सर नाउ माय मैसेजेस आर कमिंग टू यू। yes बेटा, आपका मैसेज आ गया. You have any doubt बेटा जिनी? नो सर, अप टू दिस इट इज ऑल क्लियर सर। Oh, excellent. You are taking a big risk by saying this, because when students don't have doubt, I have a lot of doubts. But यस सर, since आई विल ट्राई। others have not studied, so I'm not raising the doubt, because फिर वो मजा नहीं आएगा. Others will feel out of the place. एक्चुअली जो आपने वो अभी कैपिटल गुड्स का जो था ना हम्म. कैलकुलेशन, बस उसका जो हम्म. फर्स्ट कंप्यूटेशन था उसमें डाउट था, लेकिन आपने जो अभी समझाया वो उससे क्लियर हो गया। कोई बात नहीं. Everybody, I'll request that you all study and come in the next class, so that I have some very interesting and very pinpointed questions relating to this. See, as I had mentioned in the previous session also, and I'm repeating now, this is supposedly one of the most complicated provisions as far as the working is concerned. But if you understand the logic, as I gave you the logic, how they have devised the working, it is not at all difficult to understand. But still, there are many intricacies, there are some small pointers that we need to focus on. पर वो तभी आप फोकस ऑन कर सकते हो जब आपने एक बार पहले वो पढ़ा पढ़ा है. So I'll request that you all study this, so that we can have discussion on those minute pointers. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा. एक्चुअली यानी ये चैप्टर को पढ़ते हुए, यानी जनरली क्या होता है ना कि जैसे कस्टम्स रीड करते थे, तो उसमें जब ओके. लाइंस हम रीड करते थे ना, तो उसका लाइन का मीनिंग एक बार में यानी पता चल जाता था। ऐसा तो इसमें यानी एक लाइन को दो तीन बार थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि यानी इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होना चाहिए इस तरीके से। सुनो, अगर आपको दिक्कत आ रही है, मतलब आप एकदम सही ट्रैक पे हो. अगर कोई मुझे कहता ना कि सर मुझे एक बार में समझ गया, तो मुझे ये समझ जाता कि या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो उसने सच में पढ़ा ही नहीं. जी। क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल वर्किंग्स, पॉइंट नंबर वन. सेकंड, थोड़ा सा कैसा है कि इसमें मैथ्स आ जाता है. जब मैथ्स जी। आता है ना, तो भले मैथ्स इजी भी हो, तो भी क्या हो जाता है, मैथ्स का थॉट ही हमें थोड़ा सा उसको, जो डर है बचपन से मैथ्स के लिए, बराबर, हम्म। तभी में है ना. हम्म। सो दैट इज व्हाट डज नॉट अलाउ अस टू गो फर्दर. हम वहीं पे अटक के रह जाते हैं. इसलिए आई एम इंसिस्टिंग कि प्लीज रीड, सो दैट आपके जो भी डाउट्स आएंगे, वी विल डिस्कस. करेक्ट. एक्चुअली
क्या हुआ था ना कि काफी पॉइंट्स ऐसे थे कि मुझे 2 से 3 बार उनको यानी एक ही लाइन को बार बार पढ़ना पड़ा था उसको Mm-hmm. समझने के लिए, इसलिए थोड़ा। No problem. But what I do whenever I come across any technical point, I don't read, I write. This is my habit. I write it with my own hands so that when I write something in my handwriting, somehow it makes more sense to me. This is यस what my teacher used to tell me कि when you don't understand anything by reading, start writing. भले आप शुरुआत में उससे पूरा का पूरा कॉपी करो. The second thing which I used to do when I'm writing is I try to convert it into simpler terms. Like for example, यहाँ पे सबसे ज्यादा confusing क्या है मालूम है? ये terms जो इन्होंने यूज किए ना, टीई. यस तो मैं क्या करता था, सी टीई उनको अच्छा लगा इसलिए उन्होंने टीई यूज किया, इधर कहीं पे टीआर है, इधर कहीं पे टीएम है. दिस इज व्हाट क्रिएट्स कंफ्यूजन, आई नो. यस क्या किया मैंने, उसको अपने टर्मिनोलॉजीज दी, अपनी भाषा के दिए. सबसे बड़ी बात, सी आई टेल यू वन थिंग, one more thing which I believe I should share with everyone. See, English is not our mother language, correct? यस सर English for us is only a communication language, but for understanding things and for retaining it, if you want to understand something, anything which comes to you in your mother language is the most easiest way to understand. This is what my sir has always told me. So I made it a habit कि whenever I used to write down, instead of writing this TM, I used to use any term which I want, which is in my mother language. I will not use TM. I will say खोखा. I will say पेटी. करेक्ट, हम ये जैसे डायलॉग्स में सुनते हैं ना भाई, खोखा जी मीन्स करोड़, पेटी मीन्स लाख, समथिंग. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. यस सो सर देयर इज नो प्रॉब्लम ना, मुझे जो वर्ड ज्यादा रिलेट करेंगे, आई विल यूज दैट वर्ड. अब भले वो मैं आपको खोखा और पेटी बोलूंगा, आपको वो भी टेक्निकल लगेगा क्योंकि आपको खोखा और पेटी इतना रिलेट नहीं करता है. सो यूज द वर्ड्स विच रिलेट विथ यू. Like you can use the names of cities, you can use the names of certain localities. तो आपके लिए जो टीएम जो टेक्निकल है ना, आपने उसको सूरत बोल दिया ना, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा. आपने उसको वाराणसी बोल दिया, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा. आपने उसको दिल्ली बोल दिया, आपको शायद वो ज्यादा इजी हो जाएगा. यस करेक्ट. और फिर ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, जैसे ये पूरा जो रूल है, इसे अपनी भाषा में लिखो बाय यूजिंग योर टर्म्स एंड देन रीड इट. सडनली द रूल स्टार्ट्स मेकिंग मोर सेंस. करेक्ट. सर, नेक्स्ट टाइम आई विल डू। Please do this, beta. See, these यस are very effective techniques of learning, remembering, even retaining. Correct? यस सर, थैंक यू So, सर। yes, beta. Let us proceed now. Now, step 4, यहाँ से हमें आगे पढ़ना है. What it says, add TE to the output tax liability along with applicable interest during every tax period. ये यहाँ तक हो गया था. अब we have to study from this clarification, right? What is this clarification for? The clarification is on the requirement of reversal of ITC in respect of portion of premium for life insurance policy which is not included in taxable value. अब ये क्या है, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं. Very recently, in fact, immediately before this topic, the topic that we studied was value of supply. Correct? हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा, टाइम ऑफ सप्लाई के बाद we studied value of supply. अब ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक था, इस वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले टॉपिक में the last part that we studied, the last chapter or the last lecture on value of supply was on valuation rules. If you remember, in that we studied valuation rules for money changing, we studied valuation rules for lottery, betting, online gaming, gambling. We studied valuation rules for ticket booking, for domestic travel, for foreign travel, and for insurance. These were those specific entries that we studied relating to valuation. अब इन entries में, if you remember, if I take example of this point itself, I had explained to you कि life insurance policy जब आप लेते हो, there are two types of policies. One is endowment and the other is the term plan. Now in term plan, what happens? Whatever premium you pay, the entire premium goes for insurance only. So if nothing happens to you during the period of the insurance, you don't receive anything on maturity. But the other plan, which is endowment plan, in that what happens? You go on paying the premium. If anything happens during the period of policy, you get the policy amount. If nothing happens, still on maturity, you get the policy amount because in endowment policy, whatever premium you are paying, a major part of the premium is going towards your investment
and a very small part goes towards your insurance. क्योंकि मुझे अगर आपको वो पॉलिसी का पैसा रिटर्न करना है तो पॉलिसी का पैसा मैं कहां से रिटर्न करूंगा? आउट ऑफ योर प्रीमियम ओनली. नाउ विद दिस लॉजिक इन माइंड, इफ यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस, सो यू विल अंडरस्टैंड कि वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि if it is life insurance and it is endowment policy and you are paying a premium of rupees 100 and it is first year premium. If you remember, first year premium में valuation rule said the value will be 25%, and in further years the valuation rule said the value would be 10%. करेक्ट? तो अगर आप 100 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हो तो 100 रुपए में से 25 रुपए ही वैल्यू है. अच्छा, हेमंत 12.5% था क्या? आई रिमेंबर 10. 12.5 है. Okay, Hemant is saying 12.5. So first year it is 12%, 25%, and subsequent years it is 12.5%. Yes, I think Hemant, we even did the calculation. Correct, I remember now. We even did a calculation. Right. Now, understand this point. The point is, if you have paid 100 rupees to the insurance company and they have only taken 25 rupees as value on which they have computed and paid GST, जो हमने उस दिन हेमंत वाले केस में क्रॉस चेक भी किया, then in that particular case 100 में से 25 ही टैक्सेबल हुआ क्योंकि उतना ही इंश्योरेंस है. बाकी जो आपने 75 पे किया था, दैट वाज टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज नॉट टैक्स्ड. नाउ इफ इट वाज नॉट टैक्स्ड, द क्वेश्चन इज whether that 75 which was not taxed of the first year premium will be treated as exempt supply here, and if it is treated as exempt supply तो क्या हमें रूल 42 और रूल 43 वाला रिवर्सल करना पड़ेगा? क्योंकि इंश्योरेंस जैसे कंपनी में ऑलवेज वट एवर प्रीमियम यू विल पे फॉर एंडाउमेंट पॉलिसी, some part of it will only be insurance and a major part would be investment, and if that investment has to be treated as an exempt supply देन आपको उसके लिए रूल 42 और 43 का रिवर्सल करना पड़ेगा. तो उसके लिए फिर यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? So there is a circular number 214 bar 08 2024. What it says? Exempt supply means nil rated supplies, wholly exempt supplies under 11 or under 6, and includes non-taxable supplies. Further, non-taxable supply means a supply on which tax is not leviable. We all know these definitions. Now, the main point. The premium portion which is not includable in the taxable value, as per your rule 32(4) जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, is neither nil rated nor exempt and also not a non-taxable supply and hence cannot be considered as an exempt supply. So main clarification यही आया है कि जो ये 75 रुपीज है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का जिसे हम टैक्स नहीं कर रहे एज पर द वैल्यूएशन रूल, वो एग्जम्प्ट सप्लाई भी नहीं है. और क्योंकि वो एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं है, दैट इज व्हाई इंश्योरेंस कंपनीज को रूल 42 और 43 का रिवर्सल भी नहीं करना पड़ेगा. सो as per valuation, whatever 75% is made not taxable or is treated as not taxable is not an exempt supply and hence no need for doing reversal under this category. Correct? Have you understood this? So finally, what is given? It is clarified that the amount of premium for taxable life insurance policies not included in taxable value under Rule 32(4) cannot be considered as pertaining to non-taxable or exempt, and therefore no reversal is required as per Rule 4243 read with 1712 in respect of the said amount. So this is what is important कि valuation rule की वजह से जो भी आपने पार्ट वैल्यू टैक्सेबल किया और बचा हुआ पार्ट आपने नॉन टैक्सेबल किया, वो वैल्यूएशन है. इट इज नॉट मेकिंग द रिमेनिंग पार्ट एज एग्जम्प्ट, एंड सिंस इट इज नॉट मेकिंग इट एग्जम्प्ट, देयर इज नो नीड ऑफ प्रपोर्शनेट रिवर्सल. इज दिस फाइन विथ ऑल? नाउ this was all about section 17(1)(2). Now we come to 17(4). What does 17(4) deals with? 17(4) deals with an optional method which is given only to banks.
Now, as you all know कि बैंकिंग बिजनेस में एक मेजर सप्लाई है गिविंग लोन्स जिसपे आने वाला कंसिडरेशन है इंटरेस्ट एंड वी ऑल हैव स्टडीड एग्जामिनेशन चैप्टर वेयर वी ऑल नो दैट interest on loan deposit advances is exempt from GST. Now, where the bank has given loan, which is its business, whatever interest it has earned is fully exempt. But at the same time, especially in nowadays scenario, banks are providing multiple other services, debit card, credit card services, NEFT, RTGS services, net banking services. Then you have all these, um, I'm forgetting the name, the safe custody services, credit card services. Now, all these services are fully taxable. They are not covered in the exemption. Because of this, in a banking environment, there will always be some supply. Yes, locker. This is what I was missing the name. So, in banking setup, there will always be some supply which will be exempt and some supply which will be taxable. So, by default, banks will get covered in section 17 bracket 2. Now, for banks, for applying this proportionate reversal, there is an option given in 17 bracket 4, read with rule 38. What does it says? It says that the bank, which is by default be covered under 17.2 because some part of its supplies is taxable and some part is exempt, is given an option under 17.4. What is that option? That instead of doing the tedious working that we studied above in rule 42, 43 every month, instead of doing that, you can simply do one thing. You can simply avail 50% and reverse 50%. So instead of going by the proportionate formula, you can simply take half of the credit. That's it. Simple. So nothing doing, take 50% credit. Now, in this particular case, when you are taking 50% of the credit, in that particular case, 2-3 important points you have to keep in mind. What are those 2-3 important points? This 50% will be calculated only of the eligible credits. Like here you can see only of the eligible ITC. Now, when I say eligible ITC, it simply means that whatever ITC is applicable for non-banking and whatever ITC is covered in 17.5, which is blocked, that anyways you cannot avail. So we will not cover it in the 50% working. So you have to first remove these non-business and blocked. Remove that. For the balance ITC, do 50%. So this is first point that you have to keep in mind. Second point, if you have any supplies which you are receiving from your distinct person. Who is your distinct person? He is that person who is under the same PAN but having a separate GST number. Like in case of bank, this is very common. Let us say if I talk about ICICI Bank, ICICI Bank will have multiple branches in the same city, same IDBI, same Axis, same SBI. So nowadays, this banking business is such that within the same city, you'll have multiple branches of that bank and also in different cities and also in different states. Now, these banks take separate number for each of their branches, or at least city-wise, they take separate number. Now, in this particular case, within these branches, there is lot of internal services being given and taken. Now, when let us say branch X of SBI is giving some service to its own another branch Y, which is of SBI only, then here this 50% rule says that you will not do 50% of the services that you have received from your other branch. So whatever you are receiving from your other branch, for that you will take 100% credit. Only what you are receiving from outsiders, for that ITC only,
you will be doing 50%. This is what is the option. Further, most important point, I'm continuously saying it is option, it is option, it is option. So the point is, what is the option? The option is either you can apply rule 42-43, that is you do the proportionate working what we studied above by taking the actual values of exempt supply, which is your interest, and total supply. That is first option. Or second option is you simply apply 17.4, that is take 50% of ITC from outside, and from internally whatever you are receiving, take 100%. So this is the option given. Now, most important part is the option which is given has to be exercised only once at the start of every year, and it cannot be changed during the year. So every year at the start, you are given this option, but that can be exercised once during that year. So whatever decision you take at the start will continue and will remain intact for the whole year. You cannot change it in between. If you want to change, again, the option would be given only at the next year. So this is what is the point relating with banking. Is this clear to all? Students, is this clear to all? 74? Sir, you said that it's about in a local branches, right? Just you gave Locally. example of. It is not necessary local. It means branches of SBI only. That is Okay. same bank. It may be within the same city. It may be in another city. It may be in another state. That makes no difference. Or sir, what about international? See, international also, point is what? If you have an international branch, will it be having a GST number? Answer is no. If it is not having a GST number, then will it be charging you GST? Let us say you have a branch outside India that is providing you any service. Now that service, you will be paying tax if it is taxable under reverse charge, that is by yourself, correct? It will not be provided by GST won't be charged by that branch because it is outside India. Are you getting this point? Yes, sir. In other words, this So point there does is not apply to foreign branches. reverse Sorry. charges apply there in that Then condition. in that beta 50% is applicable. Okay. Yes. Fine. Should we proceed, students? Now we come to a very interesting part of section 17. Very famous, very much liked by the department and not liked by the businessmen, because this part restricts you from taking ITC in respect of certain specified supplies. And the reason is that government feels that these supplies are not giving you benefit in relation to business only. That is, there is a possibility that there could be personal use. So this is my logic, how I understood this entire list, that majorly 17.5 items are those where the government felt that there is a possibility of some personal element. One. Second, there are certain items which we say is negative list where the government doesn't want to give you credit. The most important point is you have purchased all these items for your business. I'm not saying you have purchased it for your personal use. You have purchased it for your business. But the nature of these supplies are such, as I said, that there is a possibility that these could be of personal use. I'll explain when we go to the points. Hence, keeping this in mind, so there are two reasons why this list is made. One, government would have felt that these are such nature that there is a very good possibility that they could be used for personal purposes. Hence, they blocked it. Second, they do not want to give credit. Like how you have negative list for outward supply. So we call it as the negative list for inward supply, where the government does not want to give credit. So these are the negative list items. Now, one very important logic. I just gave you the logical point why they have not allowed this credit. Main reason one, they felt that this could be for personal use. That is why. Or second,
They felt that this is not required to be given credit because they feel that this should be in the negative list. But if we go to the first rule, the first logic, that wherever there is a scope that it could be used for personal purposes, and the government felt that okay, if that is a possibility, I don't want to give credit, they have put it over here. But now pay attention, where you are doing business of these items only. That is, these items are the items of your business. In other words, you do business with these items. I will be saying a sentence in Hindi. Keep this sentence in mind. It will help you understand this particular point. Because in all these points where they are saying the crate of these items is blocked, they have also given an exception when it will not be blocked. I'm giving you one sentence, one golden rule, which is in Hindi. And as I said, why I'm using Hindi? Because whatever is technical, I try to understand and keep it in my mind in my mother tongue. So it remains not in my mind, it goes inside me. What is that sentence? जब आप इन चीजों को बिजनेस में यूज करोगे तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है. आप इन चीजों को बिजनेस में यूज कर रहे हो तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है. मगर जब आप इन चीजों से बिजनेस कर रहे हो तो क्रेडिट अलाउड है. सो वेयर you are simply using them in your business, credit is blocked. But where your business is run because of these items, so your business is of these items, credit is allowed. This is in English, but I'm sure the Hindi version would have connected more. So I repeat that Hindi sentence. जहां पे आप बिजनेस में इन्हें यूज कर रहे हो, क्रेडिट इज ब्लॉक्ड. जहां पे आप इनसे ही बिजनेस कर रहे हो, credit is allowed. Now, what it means that you'll understand with each item that we are going to discuss. Now, the first very common item which we find as blocked and which is always painful is motor vehicles. Motor vehicles are nowadays used by majority people in their business. वो उसे business में use कर रहे हैं, उससे business कर रहे हैं जरूरी नहीं है. जैसे I have purchased a motor vehicle, which includes my motor car, which includes a motorcycle, which I am using in business for traveling and commuting from one place to another. Credit is blocked. But if my business is selling these motor vehicles, if my business is running touring and travel business, if my business is giving coaching or training of driving these vehicles, that is, I'm a motor driving school, then I'm not using these in my business. मैं इनसे ही बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस इनसे ही चल रहा है, यानी बिना मोटर व्हीकल के मेरा बिजनेस ही नहीं चलेगा. तो जहां पे मैं सिर्फ बिजनेस में यूज करने के लिए मोटर व्हीकल खरीदता हूं, क्रेडिट इज नॉट अलाउड. जहां पे मैं इनसे बिजनेस करता हूं, क्रेडिट इज अलाउड. सो इनका क्रेडिट कब अलाउ होगा? पूरे 17.5 लिस्ट में हम जो भी पढ़ रहे हैं, क्रेडिट विल बी अलाउड फॉर ऑल दीज आइटम्स वेयर यू आर डूइंग बिजनेस विद दिस. अब आप इनसे बिजनेस कर रहे हो मतलब क्या? जैसा मोटर व्हीकल हमारे सामने जो हम डिस्कस कर रहे हैं, या तो आप इनका परचेजिंग, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, या मोटर व्हीकल के केस में यू आर रनिंग टूरिंग बिजनेस, और you are in the motor driving school business. Yes, so if you are only using in business, अभी जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया, I am doing consultancy, this is my business, this is my profession, where I am using the vehicle in the business. बिजनेस में यूज करना मतलब क्या? मैं उसको बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, मैं कोई पर्सनल यूज नहीं कर रहा हूं. मैं उसको बिजनेस के लिए यूज करता हूँ, रोज ऑफिस आने जाने के लिए, क्लाइंट्स मीटिंग के लिए, बाहर के कोई भी क्लाइंट के, या कोई भी मेरे ट्रेनिंग या किसी भी पर्पस के लिए जो कि बिजनेस है, मैं गाड़ी यूज कर रहा हूँ. सो आई एम यूजिंग इट इन बिजनेस, मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, क्रेडिट इज नॉट अलाउड. बट अगर मेरा बिजनेस टूरिंग का होता, ट्रैवल्स का होता, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रैवल्स का बिजनेस है, मतलब क्या?
You want to go somewhere, you call me, I give you my vehicle on hire. Means आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कोई गाड़ी चाहिए, यही कार मैंने आपको भाड़े पे दी है. इट मीन्स आई एम डूइंग बिजनेस विद दिस. तो बिजनेस में यूज करना मतलब मैं अपने बिजनेस में गाड़ी आने जाने के लिए यूज कर रहा हूं, क्रेडिट इज नॉट अलाउड. मैं गाड़ी से ही बिजनेस कर रहा हूं मतलब मैं या तो डीलर ऑफ कार्स हूं, या मैं टूर्स एंड ट्रेवल्स हूं, या मैं मोटर ड्राइविंग स्कूल हूं. क्रेडिट इज अलाउड. एंड दिस सेम लॉजिक बिजनेस में यूज करना या इसी से बिजनेस करना इज what will be continued in all these points that we are going to discuss. Have you all understood this before I go to details of this? सर इट मीन्स हम इसको ऐसा कह सकते हैं ना, जैसे कि कैपिटल गुड्स होते हैं, तो ये अगर ये हमारे लिए फिक्स्ड एसेट का काम करती है तो फिर वो हमारे लिए अलाउड नहीं है। और अगर हम इसको हमारे बिजनेस में ऑपरेटिंग की तरह से लेते हैं तो हम उसका जीएसटी ले सकते हैं। नहीं। ऐसा जरूरी नहीं बेटा, क्योंकि अगर मेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है तो भी ये मेरा मोटर व्हीकल बैलेंस शीट में मोटर व्हीकल एक ही जगह पे आता है. सिर्फ हाँ, अगर मैं डीलर हूं तो मेरे लिए मोटर व्हीकल स्टॉक इन ट्रेड में आएगा. यस। अदरवाइज या मैं मेरे ऑफिस के काम से गाड़ी यूज कर रहा हूँ जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, या मैं टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस में हूँ, या मैं आपके मोटर ड्राइविंग स्कूल चला रहा हूँ. इन तीनों केस में मोटर व्हीकल मेरा एक ही जगह पे आने वाला है, जो आप फिक्स असेट बोल सकते हो. यस सर। मगर फर्स्ट केस में अलाउड नहीं है, जहां पे मैं मेरे अभी फिलहाल प्रैक्टिस में यूज कर रहा हूँ, और बाकी दो केसेस में अलाउड है. सो इसका बुक्स में क्लासिफिकेशन कहाँ पे है, आई डोंट थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस. ओके। प्लीज, मैंने जो अभी आपको बताया वो सिंपल है. यस आप सर। सिर्फ इसको यूज कर रहे हो वाले हो बिजनेस में, या इसी से बिजनेस करने वाले. आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इसी यस से सर। यस बिजनेस सर। करना. यस सर। इसके बिना सर मेरा बिजनेस ही नहीं होने वाला है. करेक्ट. यस सर। तो क्रेडिट इज अलाउड. तो फिर 17.5 मुझे कहीं पे भी तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि पूरे 17.5 में जितने भी हम नाम पढ़ेंगे कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक है, सब में ये कॉमन एक्सेप्शन आपको मिलेगा. ओके सर। ठीक है. क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा. सर सर यहाँ पे हम मोटर व्हीकल को जैसे पार्शियल तो नहीं डिवाइड करेंगे ना, जैसे हम अपर केसेस में करते थे कि कुछ हम लोग बिजनेस में यूज कर रहे हैं और कुछ बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। लाइक मोटर व्हीकल मैं अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर रही हूँ और हायरिंग पे देने के लिए भी यूज कर रही हाँ, हूँ। अगर आपने वैसा किया बेटा तो फिर क्या हो जाएगा, आपको ऊपर वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, 17.2 वाला. क्योंकि समझो, अब मैं मेरा इस एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, आपका पॉइंट मैं समझ गया. मेरा जो कार है, आई एम इन कंसल्टेंसी बिजनेस, राइट. अब जब मैं मेरे क्लाइंट के मीटिंग के लिए कार यूज कर रहा हूँ, या कोई भी जगह पे ट्रैवलिंग में जहां पे मुझे डिपार्टमेंट जाना है, कोर्ट जाना है, मैं इसके लिए कार यूज कर रहा हूँ, तो इसको मैं कहूंगा मैं इसे बिजनेस में यूज कर रहा हूँ. करेक्ट. तो क्रेडिट इज नॉट अलाउड. पर लेटेस्ट से मेरा एक और लाइन ऑफ बिजनेस है जहां पे मैं ये गाड़ी भाड़े पे देता हूँ. तो समझो मैं 4 डेज 5 डेज अभी गाड़ी खुद यूज कर रहा हूँ. खुद यूज कर रहा हूँ मतलब मेरे ट्रैवलिंग के लिए. और जो वीकेंड्स है, जब मैं भी कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, या मेरा जो भी पर्पस है उसमें मुझे गाड़ी नहीं लगने वाली है, तो मैं इसे भाड़े पे चला रहा हूँ. सो इफ लेट अस से दिस हैपेंस, देन व्हाट विल हैपन, देन माय कार इज पार्टली इन 17.5 विच इज ब्लॉक, जहां तक मैं उसे अपने कंसल्टेंसी काम के लिए खुद आने जाने के लिए यूज कर रहा हूँ. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज आउटसाइड 17.5, क्योंकि मैं इसे हायर पे भी दे रहा हूँ. अब इंटरेस्टिंगली, ये केस सिनारियो स्पेसिफिकली लॉ में लिख के कहीं पे भी नहीं दिया है, बट आई एम इंटरप्रिटिंग द लॉ लाइक दिस कि उस केस में आपको इसको 17.2 जो हमने ऊपर प्रोपोर्शनेट पढ़ा, उस हिसाब से आपका इसका थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा. बट एज आई सेड, लॉ में कहीं पे भी नहीं दिया है, तो इसके ऊपर अभी तक कहीं पे किसी ने सोचा नहीं है, कोई चर्चा नहीं हुई है. बट आई एम श्योर दिस इज हाउ इट हैज टू बी ट्रीटेड. ठीक है बेटा. यस सर। गुड क्वेश्चन. नाउ, अब ये जो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया, इसे मोटर व्हीकल के लिए नहीं, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ब्लॉक्ड आइटम्स. मोटर व्हीकल वाज वन एग्जांपल, और वो समझना और कनेक्ट होना भी इजी था, इसलिए हमने मोटर व्हीकल का एग्जांपल लेके पढ़ा. नाउ वी गो अहेड विद ईच ऑफ दीज आइटम्स इन डिटेल्स. सो सबसे पहले, व्हाट इज ब्लॉक टेस्ट, मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वेंस. तो गाड़ी का जो आईटीसी है, लेटेस्ट से आपने गाड़ी खरीदा, तो उसका जो आपने जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी भी ब्लॉक्ड है. सेकेंड,
उससे रिलेटेड जो आप रेगुलर सर्विसेज लेंगे, लाइक हर साल आप उसका इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं, यू गिव इट फॉर रेगुलर सर्विसिंग, और अगर कभी ब्रेकडाउन हुआ यू हैव टू गेट द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डन, इन सबके इनवॉइसेस पे भी आपको जीएसटी लग के आता है। तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर परचेजिंग द कार, तो गाड़ी पे जीएसटी आपने पे किया, और उसके बाद जो रेगुलर आप सर्विसेज अवेल कर रहे हो ये सारे, इन पे भी आप जीएसटी पे कर रहे हो। रूल क्या है, जब गाड़ी का जीएसटी अलाउड है तो उनके इन सारे सर्विसेज का भी अलाउड है, जब गाड़ी का ब्लॉक्ड है तो उनके इन सारे सर्विसेज का भी ब्लॉक्ड है। दिस विल बी द रूल। आई होप दिस इज क्लियर। सो वेयर गाड़ी का क्रेडिट अलाउड तो उसके इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर्स का भी अलाउड, गाड़ी का क्रेडिट ब्लॉक तो उसके इंश्योरेंस रिपेयरिंग सर्विसेज का भी क्रेडिट ब्लॉक। नाउ a very important point over here to be understood is the definition of motor vehicle, क्योंकि we are talking about the blocking of credit of motor vehicle, so we need to understand what is motor vehicle. The definition which is given in the CGST Act says motor vehicle means motor vehicle as per the Motor Vehicle Act. So now what is motor vehicle as per Motor Vehicle Act? So it is this, what it says, motor vehicle excludes, अच्छा इसका एक्चुअल डेफिनेशन ऊपर दिया है डेफिनेशंस वाले सेक्शन में, बट हियर वी आर रीडिंग द एनालिटिकल पार्ट। सो मोटर व्हीकल में क्या नहीं आएगा, व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स, तो आपके जो रेलवे वाले कोचेस और वैगन्स है वो नहीं आएंगे। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर बीइंग यूज्ड इन द फैक्ट्री और एनी एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस। अब इसमें क्या आता है, अगर आपको पता रहेगा तो विद इन फैक्ट्री मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए छोटे छोटे ऐसे व्हीकल बोलिए या ऐसी गाड़ियां हैं जिसके आगे वो फोर्कलिफ्ट और ये लगा रहता है जो मटेरियल को उठाता है और वो गाड़ी आगे आप लेके जाते हो। सो वेयर सच स्पेशली डिजाइंड व्हीकल्स आर यूज, जो कि इंटरनल यूज के लिए है, एनक्लोज्ड प्रेमाइसेस में है, फॉर मूविंग मटेरियल और मूविंग पीपल, दैट इज नॉट कवर्ड इन मोटर व्हीकल। अच्छा, व्हेन आई एम सेइंग व्हेन इट इज नॉट कवर्ड इन मोटर व्हीकल एक्सक्लूड्स, मतलब इन सबको 17(5) का रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता है, इन सब का क्रेडिट आपको मिलेगा। 17(5) में कवर नहीं, बिकॉज 17(5) कवर्स मोटर व्हीकल, इफ दीज आर नॉट मोटर व्हीकल मतलब ये 17(5) के ब्लॉकिंग के बाहर है, इसको आपको आगे जो भी हम डिस्कस करने वाले 17(5) में वो लागू नहीं होता, इनका क्रेडिट आपको मिलेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे डे टू डे व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, कि आपके और मेरे पास, जैसे कॉमन क्वेश्चन मेरे को आता है कि अगर मेरे पास कोई मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है, या कोई भी स्कूटी है, कोई भी एक्टिवा है, वेदर इट इज मोटर व्हीकल, उसका आंसर आपको यहां से मिलता है, क्योंकि अगर वो मोटर व्हीकल नहीं है तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर वो मोटर व्हीकल है तो 17(5) में ब्लॉक हो जाएगा, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो नाउ वेदर इट इज मोटर व्हीकल और नॉट, आपका जो टू व्हीलर है वो आंसर यहाँ पे। सो मोटर व्हीकल एक्सक्लूड्स व्हीकल विथ लेस देन 4 व्हील्स, यानी आपका टू व्हीलर आ गया उसमें, fitted with engine capacity up to 25 cc. This is what is the definition. अब इसका ये जो तीनों पॉइंट्स हमने पढ़े उसका नीचे इन्होंने एक्सप्लेनेटरी पॉइंट भी दिया 10, रेलवेज, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स विद इंजन कैपेसिटी अप टू 25 cc, bicycle etc. do not fall in the definition of motor vehicle, and since they are not falling in the definition of motor vehicle उनको 17(5) का ब्लॉकिंग एप्लीकेबल नहीं है। Is this clear? Any questions with this? Good. Good question, Mansha. What if it is more than 4 wheels? Mansha, give me an example of more than 4 wheels. Can you name a vehicle which is more than 4 wheels? See, firstly, answering your question directly, 4 wheels or more than 4 wheels is motor vehicle. क्योंकि what is not motor vehicle is vehicle less than 4 wheels, right? So what is having more than 4 wheels is always a motor vehicle. ठीक है? Okay. So Hemant is saying heavy duty trucks. Acha, because you are saying because the back tires are having 2 or 3 tires. Okay, so you are counting it as wheels means a number of tires. Okay, because otherwise wheels are 4 only, at least as per my knowledge. ठीक है, fine. Now, what is very important, students, is what we are going to study now.
सो आईटीसी इज ब्लॉक्ड ऑन मोटर व्हीकल, जो अभी हमने ऊपर देखा। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर थ्री टाइप्स ऑफ कन्वेंसेस। मोटर व्हीकल जिसका डेफिनेशन हमने पढ़ा, लेटेस्ट से जो रोड पे चलता है। सेकंड वेसल जो सी में या वाटर में चलता है, एंड थर्ड इज एयरक्राफ्ट जो एयर में चलता है। तीनों के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन है। Now, what is the restriction? When these conveyances are for passenger transportation, then only there is a restriction. It means अगर यही व्हीकल्स आप गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो, जैसे ट्रक्स आ गए, कंटेनर्स आ गए, वो मोटर व्हीकल होंगे, मगर उसको 17.5 का ब्लॉकिंग एप्लीकेबल ही नहीं, बिकॉज व्हेन यू रीड 17.5, 17.5 में गुड्स व्हीकल्स को ब्लॉकिंग नहीं किया है। तो आपके पास जो भी गुड्स व्हीकल है, फिर वो एकदम छोटे से छोटा जो होता है, जिसको हम छोटा हाथी बोलते हैं, 5 व्हीलर होता है, फिर वो छोटा ट्रक होता है, फिर नॉर्मल ट्रक होता है, और हैवी ड्यूटी ट्रक्स और कंटेनर्स और ट्रेलर्स होते हैं, ये सब के सब आर फुल्ली एलिजिबल फॉर आईटीसी। देर इज नो ब्लॉकिंग अंडर 17.5। 17.5 का ब्लॉकिंग सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स के लिए है। और क्यों? जिसका मैंने आपको लॉजिक स्टार्टिंग में बताया। मे बी बिकॉज द लॉ मेकर्स फील कि ऐसा हो सकता है कि आप इसका पर्सनल यूज कर रहे हो, या आपने पर्सनल यूज के लिए ये खरीदा है, सिर्फ आप इसको बुक्स में दिखा रहे हो, इसका इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने के लिए, और जीएसटी में जीएसटी का आईटीसी लेने के लिए। आई थिंक दिस इज देयर थॉट प्रोसेस, which according to me is not fully correct. They should have allowed this. Maybe they could have allowed it partly, but fine. For the time being, it is fully blocked. But what is blocked is only where it is for passenger transportation. Fine. और फिर उसके बाद मोटर व्हीकल के साथ उससे रिलेटेड जो भी उसके सर्विसेज है, all are having the same logic. एक्सक्यूज मी Now, सर। yes बेटा बोलो। तो फिर ये अभी आपने बताया कि पैसेंजर व्हीकल है उसको यानी वो ब्लॉक्ड है। उसके लिए ब्लॉकिंग है, हाँ वो उसके हमेशा लिए। ब्लॉक्ड है वो नहीं। अभी हम उसके ओके। एक्सेप्शंस पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्शन जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां पे आप इसको बिजनेस करने के लिए यूज कर रहे हो, इसका भी क्रेडिट अलाउड है। ये सर। तो करेक्ट। सो फर्स्टली सी इट इज लाइक दिस। लेट अस से आई एम गिविंग यू अ चार्ट, विजुअलाइज अ चार्ट। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल में दो पार्ट्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। गुड्स ट्रांसपोर्ट फुल्ली अलाउड, या इसको हम ऐसे कहेंगे 17.5 इज नॉट एप्लीकेबल, तो आपको इसको ब्लॉक करना ही नहीं। फिर हम यस। आते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में भी सब पार्ट्स हैं। सब हम्म। पार्ट्स में पहला सब पार्ट है जहां पे आप इसी का बिजनेस कर रहे हो या इसी से बिजनेस कर रहे हो, जैसे यू आर डीलर इन मोटर व्हीकल, या यू आर टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस, या यू आर मोटर ड्राइविंग स्कूल। इनके लिए मोटर व्हीकल का क्रेडिट फुल्ली अलाउड है। करेक्ट। ओके सर। फिर यस हम सर। दूसरा एक और कैटेगरी पढ़ने वाले हैं जो अभी आएगा नीचे, जहां पे आपके मोटर व्हीकल का कैपेसिटी 13 पैसेंजर्स से ज्यादा है। इन शॉर्ट आपका मिनी बस है या बस है, यस। इसका भी क्रेडिट अलाउड है। क्रेडिट ब्लॉक सिर्फ एक केस का है। तो अभी एक चीज समझो, गुड्स ट्रांसपोर्ट का तो क्रेडिट फुल्ली अलाउड हो गया, पैसेंजर में भी दो का क्रेडिट भी फुल्ली अलाउड है। कौन से दो? ये जो मैंने आपको बताया जहां पे आप मोटर व्हीकल से बिजनेस कर रहे हो। दूसरा जो अभी हम पढ़ने वाले हैं जहां पे कैपेसिटी 30 पैसेंजर से 13 से ज्यादा है, ज्यादा है। ये दोनों का भी फुल्ली अलाउड है। ब्लॉकेज में कौन आ रहा है? जिसका कैपेसिटी 13 पैसेंजर तक है, और जिसे आप बिजनेस में यूज कर रहे हो। जिससे बिजनेस नहीं कर रहे, आप उसे हम्म। बिजनेस में यूज कर रहे हो। सो यस। ब्लॉकिंग एक ही चीज है। पैसेंजर व्हीकल में, पैसेंजर व्हीकल जिसका कैपेसिटी 13 पैसेंजर्स 13 तक से का है, ज्यादा। और जिसे आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, आप उससे बिजनेस नहीं कर रहे। यस सर। दिस इज द बॉटम लाइन। अगर मैं इस पूरे 17.5 ए बी बी ए, ये जो पूरा है, तीन सेक्शंस, तीन क्लॉजेस, तीनों का समरी इज दिस। Yes, sir. Actually, I was asking about the AMTS buses are running on the road. About that, I was आपको आंसर asking. मिल गया ना उसका? Yes, sir. Now I get. 13 सीटर से ऊपर है ना? Yes, खत्म। sir. और Yes, sir. पहली Now बात, ये जो clear. एएमटी वाले जो आप बसेस बोल रहे हो, आई एज फार एज आई अंडरस्टैंड इट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जो जो क्या बोलते हैं, पैसेंजर्स के लिए चल रही है ना ये बसेस, हम Yes, वहां sir. पे Yes, देखेंगे। sir. तो वैसे भी हमारे पहले वाले एक्सेप्शन में वैसे भी कवर हो रहा है कि आप उसी से बिजनेस कर रहे हो ना। Yes, यू आर sir. बिजनेस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, तो वो तो वैसे भी अलाउड है। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Thank you. या ये स्टूडेंट्स बाकी सभी को समझा? एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस?
So see, it is like this. गुड्स ट्रांसपोर्ट फुल्ली अलाउड, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट उसमें भी पहला कैटेगरी जहां पे आप इससे बिजनेस करने वाले हो, जिसमें तीन कैटेगरीज आते हैं, फुल्ली अलाउड। सेकंड, जहां पे इसका कैपेसिटी 13 सीट से ज्यादा का है, फुल्ली अलाउड। जहां पे इसका कैपेसिटी 13 सीट्स तक है या उससे कम है और आप उसको उससे बिजनेस नहीं कर रहे, आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हो, देन ओनली दिस ब्लॉकिंग अप्लाइज। दैट इज सर व्हाट इज इन नटशेल। यस बेटा। अगर मोटर व्हीकल में इन अ केस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कंपनीज के थ्रू, यूज देयर मोटर टू पिकअप एंड ड्रॉप आउट एम्प्लॉयज, so sir this is cover, this is blocked or it is allowed and that? गुड। वापस मैंने जो एक लाइन का रूल दिया बेटा, चलो हम वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। मनशा, आई थिंक इट इज योर क्वेश्चन, राइट? किसका क्वेश्चन है, मिताली का है या मनशा का है? सर मेरा है, मिताली का। मिताली, हाँ मिताली सुनो अभी। सो यू विल आंसर। मैंने आपको रूल क्या बताया, जहां पे आप वो गाड़ी बिजनेस में यूज कर रहे हो, क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। आप उस गाड़ी से बिजनेस कर रहे हो, क्रेडिट इज अलाउड। और उसमें अभी जैसे मैंने आपको ये 13 सीटर के ऊपर वाला, 13 सीटर के नीचे वाला पॉइंट भी बता दिया। तो सबसे पहले हम आपका एग्जांपल लेते हैं। यू आर अ फैक्ट्री, आप अपने एम्प्लॉयज के पिकअप ड्रॉप के लिए व्हीकल यूज करो, करेक्ट? दिस इज योर क्वेश्चन। यस सर। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये जो व्हीकल आप यूज करो पिकअप ड्रॉप के लिए, ये 13 सीटर के ऊपर के कैपेसिटी का है? लाइक इज इट अ बस, इज इट अ मिनी बस? सर नहीं, वो 13 से डाउन है। नीचे है, मतलब वो आपके रेगुलर जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं यस। भाई, 7 सीटर मैक्सिमम होता है। आज के एसयूवी वगैरह भी रहेगा तो 7 सीटर रहेगा, राइट? यस सर। वैसा है, करेक्ट? या मिनी, वो क्या मिनी वैन, वो मिनी जो यस सर, वैन्स मिनी आते हैं, वैन। राइट। मिनी वैन, मगर वो भी 13 सीटर तक ही है, करेक्ट? यस सर। तो हम पहले एक्सेप्शन में तो नहीं है कि भाई वो 13 सीटर के ऊपर होता, तब तो हमें ये सब कुछ देखना ही नहीं पड़ता। अब आता है मेन पॉइंट। ये जो मैंने आपको सेंटेंस बोला ना बेटा, दिस इज द बॉटम लाइन। आप मुझे ये अभी आपको खुद समझना है। सी, ऐसा ये सेंटेंस ऐसा नहीं है कि ये कोई बोलते हैं ना सेंटेंस पढ़ने से आंसर आ जाएगा, इसको आपको अप्लाई करना है। व्हाट इज द सेंटेंस, अब आप मुझे अप्लाई करो सभी लोग। जब मैं मेरे डायरेक्टर्स, मेरे एम्प्लॉयज, मेरे ओनर्स, किसी के भी ट्रैवलिंग के लिए मैं ये गाड़ियां यूज कर रहा हूं, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ योर एम्प्लॉयज। किसी को मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, भाई अगर आप कंपनी हो, आपके डायरेक्टर्स है, उनको रेगुलरली आना जाना है कोई भी मीटिंग्स के लिए, उनके लिए गाड़ी यूज हो रही है, या उनको भी घर से लाने ले जाने के लिए गाड़ी यूज हो रही है, उनके लिए तो बहुत अच्छी भाई हाई ग्रेड की गाड़ियां यूज होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर। भाई दे विल नॉट बी गिवन एनी टाइप ऑफ वैन और बस, उनके लिए तो एक स्पेशल कार जाएगी विद शॉफर, एंड द कार मे बी इवन मर्सिडीज, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द डायरेक्टर। सो द क्वेश्चन इज, आपको ये वाले सेंटेंस का एप्लीकेशन समझना है। क्या था मेरा सेंटेंस, कि जब आप इन लोगों को गाड़ी दे रहे हो लाने ले जाने के लिए, लाइक इन योर केस, और उसमें मैंने एक एक्सटेंडेड पॉइंट दे दिया, भाई आपके डायरेक्टर्स को मीटिंग्स के लिए जाना है, उसमें भी वो उस गाड़ी में जा रहे हैं, इसको आप क्या कहोगे? वेदर व्हीकल बिजनेस में यूज हो रहा है या व्हीकल से बिजनेस हो रहा है? मिताली, यू टेल मी। बिजनेस में यूज हो रहा है। वेरी गुड। अब अगर वो बिजनेस में यूज हो रहा है, करेक्ट, तो यस क्या सर। क्रेडिट अलाउड होगा या यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्लॉक। परफेक्ट आंसर। Mansha, I hope now you have also understood, because you also said कि शायद आपको ये पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आई होप नाउ योर कंफ्यूजन इज आल्सो क्लियर। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आई टेक रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप भी अपने आजू बाजू के एग्जांपल्स लो, बिकॉज द मोमेंट यू टेक योर रियल लाइफ एग्जांपल्स, इट कनेक्ट्स मोर। बाकी जो बुकिश एग्जांपल्स है ना, वो सिर्फ बुक के लिए ठीक है। सो टेक रियल लाइफ एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। बिजनेस में यूज करना और उससे बिजनेस करना। सो जब आप उससे, चलो अपन दूसरी भाषा में बात करते, जब आप उस गाड़ी से कमाओगे ना, तो उसका आईटीसी मिलेगा। सिंपल लॉजिक। आपको गाड़ी से कमा रहे हो तो आपको आईटीसी मिलेगा। चलो मैं एकदम सिंप्लीफाइड, आई थिंक ये अभी सबको ज्यादा अच्छे से समझेगा, क्योंकि कमाना सबको समझ में आता है। सो जब आप गाड़ी से कमाओगे, क्रेडिट इज अलाउड, तब वो इधर ब्लॉकिंग में नहीं आएगा। फिर वो 13 सीटर के नीचे होगा तो भी क्रेडिट इज अलाउड। सी, 13 सीटर के तो ऊपर है तब तो हमेशा क्रेडिट इज अलाउड। 13 सीटर तक है या उसके नीचे है तो ही ये
ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, जिसका मैंने आपको एक सिंपल आंसर दे दिया। करेक्ट। नाउ द सेम रूल इज गिवन फॉर वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट जो हमने मोटर व्हीकल के लिए पढ़ा, एंड द सेम रूल इज गिवन फॉर ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द मोटर व्हीकल। करेक्ट। अब इसी में एक और चीज ऐड कर दी, वो क्या? अगर मुझे मोटर व्हीकल परचेस करने पे आप क्रेडिट ब्लॉक कर रहे हो, देन आई विल यूज माई ब्रेन्स, आई विल डू वन थिंग, I will not purchase the motor vehicle. I will take it on lease or on rent or on hire. So instead of buying the motor vehicle, I will hire the vehicle. So now what I'm paying is the renting charges or the hiring charges of the motor vehicle. Now, if I'm paying the hiring charges of the motor vehicle, in this particular case, same rule applies. What is the same rule? If आई एम यूजिंग इट इन माई बिजनेस, भाई मैंने जो मेरे एम्प्लॉयज का पिकअप ड्रॉप करना है उसके लिए जो मुझे वैन चाहिए, वो वैन मैंने खुद की परचेज नहीं की, मैंने वो किसी एजेंसी से रेंट आउट की है, वो मुझे पिकअप एंड ड्रॉप करके दे रहे हैं, इट विल बी ब्लॉक्ड। सो सिंपल, आप गाड़ी खरीदो या वो गाड़ी रेंट पे लो इन द फॉर्म ऑफ रेंटिंग, लीजिंग, हायरिंग, इफ आप उसको बिजनेस में यूज करने वाले हो, क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। अगर आप उससे बिजनेस करने वाले हो, क्रेडिट इज अलाउड। इज दिस क्लियर? अब सिर्फ ये वाला पॉइंट है कि आपने उसको रेंट पे लिया, हायरिंग लीजिंग पे लिया, इसमें एक और एक्सेप्शन जहां पे क्रेडिट अलाउ होगा। सो आपका 13 सीटर के अंदर है, मतलब मैं अभी मिताली वाला एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक कोई वैन ली है, भाड़े पे ली है, और उसका काम क्या है, रोज सुबह पिकअप करना है, रोज शाम को ड्रॉप करना है, और मैं उस वैन वाले एजेंसी को उसके जो भी चार्जेस होंगे एज पर द पिकअप ड्रॉप जितना भी उसने किया रहेगा, उसका मैं उसको मंथली चार्जेस पे कर रहा हूँ। सो आई हैव टेकन इट ऑन रेंट। आप हायरिंग बोलो, लीजिंग बोलो, रेंटिंग बोलो, इट इज वन एंड द सेम। नाउ 13 सीटर के नीचे है और बिजनेस में यूज हो रहा है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। सो टेक्निकली इट इज ब्लॉक्ड, राइट? यस। बट इसमें एक और छोटा सा एक्सेप्शन दिया है इस पर्टिकुलर हायरिंग लीजिंग वाले पॉइंट में सिर्फ, कि जहां पे सच सर्विसेज व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इट विल बी अलाउड। तो जब मैं गाड़ी भाड़े पे ले रहा हूं और मैं अपने एम्प्लॉयज को वो दे रहा हूँ पिकअप ड्रॉप के लिए, उनके आने ले जाने के लिए, और ये मैं कर रहा हूं बिकॉज ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। What is a statutory obligation? The statutory obligation is, or meaning of statutory obligation is, कि जहां पे किसी भी एक्ट ने, किसी भी लॉ ने ये कंपलसरी किया है कि मुझे मेरे एम्प्लॉयज को पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देना पड़ेगा। जैसे कुछ स्टेट्स के जो फैक्ट्रीज एक्ट या लेबर रिलेटेड एक्ट्स है, वहां पे ये कंपलसरी है। कुछ स्टेट्स में स्पेशली फीमेल्स के लिए, या इफ देयर आर इन नाइट शिफ्ट फॉर फीमेल्स, तो उनके लिए ये कंपलसरी किया है। तो जिन स्टेट्स में ऐसा कंपलसरी है कि आपको आपके एम्प्लॉयज को पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी देनी है, या इन केस ऑफ फीमेल्स दे हैव मेड इट कंपलसरी, तो जो आप फीमेल्स के लिए पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अरेंज करते हो, सो फॉर दैट केस क्रेडिट विल बी अलाउड। सो पैसेंजर व्हीकल में अगर आप इसको हायर पे ले रहे हैं and it is used for your employees pickup and drop, and it is under a statutory obligation, the credit is still allowed. The logic is very simple. आप ये अपने मन से, अपने मर्जी से नहीं कर रहे हो, आप ये कर रहे हो बिकॉज किसी एक्ट ने आपको कंपल्शन किया है। सो हेंस वी आर अलाउइंग द क्रेडिट। Yes students, I hope this is clear to all. Sir, if by using aircraft, we normally purchase tickets for employees, right? So that Correct. will also block No, ITC hosted. no, see, understand this. आप एयरक्राफ्ट खरीदते हो, उसी का आईटीसी ब्लॉक है। आपने एयरक्राफ्ट में कोई टिकट बुक की for your employees travel, and obviously I'm presuming the employees traveling for some official work, Yes, sir. credit is fully allowed. See, this particular entries हमने जितने भी अभी तक पढ़े हैं मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, they are not for booking one ticket in that vessel, aircraft or vehicle. Correct? It is where you are buying the vessel, aircraft, vehicle, or in this case you are taking the entire aircraft vessel on hire. See, I hope I understood आपको ये डाउट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ड आ गया हायरिंग लीजिंग। करेक्ट?
अब आप Yes. हायरिंग लीजिंग जो कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज हायरिंग लीजिंग ऑफ द एंटायर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट विच इज ब्लॉक्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जब उस वेसल में, उस एयरक्राफ्ट में एक टिकट बुक करते हो, इट इज नॉट द सर्विस ऑफ रेंटिंग द एंटायर एयरक्राफ्ट। इनफैक्ट हम रेंट करते ही नहीं है। आप एक चीज समझो, वापस से हिंदी में है ना, या आपका जो मदर टंग रहेगा उसमें ये चीज समझो। हम कभी नहीं बोलते, अगर आपने कोई समझो टिकट बुक की है एयरक्राफ्ट में, लेट अस से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर फॉर सम ऑफिशियल वर्क, आपके कंपनी ने आपका एक टिकट बुक किया है आने जाने का, आप क्या बोलोगे कि मैंने उस प्लेन को भाड़े पे लिया? आप ऐसा कहोगे? आंसर इज नो। आप कहोगे मैंने प्लेन में एक टिकट बुक किया है। सी द लैंग्वेज डिफरेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज मैंने प्लेन भाड़े पे लिया है। सी द लैंग्वेज, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ द मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट। उस पूरे प्लेन को, उस पूरे मोटर व्हीकल को भाड़े पे लेना इज कवर्ड। उसमें एक टिकट बुक करना इज नॉट ब्लॉक्ड। आई होप यू आर गेटिंग दिस बेटा। Sir, if in a contract, like you say that ticket ITC is allowed, right? If a Yes, company agreement is like that, you have to in hiring any vehicle also, we use that only 10 employees are allowed rented to taking 10 employees daily and drop correct. pick it up. Then this ITC is allowed. No beta, see, If ST is understand 13 one or thing. 14. Understand one thing. What is the service that the company is getting? आप क्या कहोगे? आपने वो, वापस हिंदी में बात करते, यू आर हिंदी स्पीकिंग बेटा। मिताली, व्हाट इज योर मदर टंग? Yes, sir, Hindi. हाँ, तो हम हिंदी में बात करते, ठीक है। आई होप अदर्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू प्लीज टेल मी। सो आप क्या कहोगे? यू आर अ कंपनी, आपने कोई वैन बुक की है जो आपके एम्प्लॉयज को पिकअप ड्रॉप करेगी, और ऑब्वियसली वो वैन का कैपेसिटी कि भाई 10 व्हीकल 10 एम्प्लॉयज को लेके जाना है, करेक्ट? दिस इज योर पॉइंट। Yes, sir. आप क्या कहोगे कि मैंने वैन बुक की है, या मैंने वैन में 10 एम्प्लॉय की सीट्स बुक की है? व्हाट विल यू से इन हिंदी? आप इस खर्चे को कैसे लिखोगे अपने बुक्स में? तो राइट, मैं यही बोलूंगी कि वैन बुक की है। सिंपल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो अंडरस्टैंड फर्स्टली व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्विस, करेक्ट? चलो अब मैं यस। आपको इसको दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कब पता चलता है। चलो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात छोड़ देते हैं। कब पता चलता है कि वो नेचर ऑफ सर्विस रेंटिंग लीजिंग है, या वो बुकिंग ऑफ अ टिकट है? सिंपल। जहां पे आप गाड़ी बुक करते हो ना बेटा, वहां पे गाड़ी आपके डायरेक्शंस के हिसाब से चलता है। आप जब बोलोगे तब वो गाड़ी वाला आएगा, आप जितने बजे बोलोगे, जहां पे बोलोगे वैसे वो आएगा। और जब आप टिकट बुक करते हो ना, तो आप गाड़ी वाले के टाइम टेबल के हिसाब से चलते हो। सी द डिफरेंस, करेक्ट ना? यस सर। तो लैंग्वेज को भी अगर मैं बाजू में रखूं, सो द डिफरेंस बिटवीन दिस सर्विस विच इज ब्लॉक एंड द सर्विस जो आपका क्वेश्चन था कि मैंने कोई टिकट बुक की जिसको मैं बोल रहा हूं अलाउड, क्या फर्क है? आपके टाइम टेबल के हिसाब से गाड़ी चलेगी, या गाड़ी के टाइम टेबल के हिसाब से आप चलोगे? आपके डायरेक्शन के हिसाब से गाड़ी चलेगी, रुकेगी, कोई पर्टिकुलर स्पॉट से पर्टिकुलर स्पॉट तक जाएगी, या गाड़ी के रूट के हिसाब से आप जा रहे आ रहे हो? दैट इज द डिफरेंस। जहां पे आपके डायरेक्शन से सब होना है ना, इट इज दिस सर्विस विच इज इन ब्लॉकिंग। जहां पे गाड़ी का सब कुछ फिक्स है, टाइम टेबल फिक्स है, उसका रूट फिक्स है, आपको उसके हिसाब से चलना है, इट इज बुकिंग ऑफ टिकट। यस सर, क्लियर, थैंक यू। I hope everybody is clear with the difference, because one is blocked, one is not blocked. ठीक है ना? Anybody having any other questions, students? Good. मनशा, आपने कुछ पूछा है, बिजनेस शुड बी कोर बिजनेस। बेटा कोर बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इज बिजनेस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो मेरा मेन बिजनेस होगा और वो एडिशनल बिजनेस नहीं होगा। माई कोर बिजनेस कैन बी एनीथिंग। भाई कोर बिजनेस वो होता है जिसमें से ज्यादा पैसा आप कमाते हो। सो मे बी आपने मेन बिजनेस एक्स रखा रहेगा और वाई को आपने सेकेंडरी रखा रहेगा,
कल अगर वाई आपको ज्यादा कमा के दे रहा है ना, इनडायरेक्टली आपका सारा फोकस वाई पे रहेगा, वाई विकल्प कोर एंड एक्स बिकम सेकेंडरी। सो वो क्लासिफिकेशन डिस्टिंक्शन नहीं है, इट इज सिंपली आप बिजनेस में यूज कर रहे हो या आप उससे कमा रहे हो। आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड्स। अब मैं ये नहीं बोल रहा आप उससे बिजनेस करो, मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, क्या आप उस व्हीकल से कमा रहे हो। अब वो कमाना आपका कोर बिजनेस है, वो कमाना आपका सेकेंडरी बिजनेस है, मेक्स नो डिफरेंस बेटा। ठीक है Mansha, I hope I have made your question doubt clear. Now we go to another circular which has some other issue which was raised. What is the circular? The circular is clarification on ITC availability in respect of demo vehicles, which are motor vehicles for transportation of passengers having approved seating capacity of not more than 13, including driver in terms of class 17.5A. What is this? See, what are demo vehicles? I am a vehicle dealer. अब सबसे पहले ये समझ लो, इफ आई एम अ व्हीकल डीलर, मैं तो वैसे भी एक्सेप्शन में हूं, मुझे आईटीसी मिलना ही है, बिकॉज व्हीकल परचेज सेल करना ही मेरा बिजनेस है। सो मुझे तो आईटीसी मिलना ही है। बट द पॉइंट इज ऑफ डेमो व्हीकल्स, व्हाट इज दिस डेमो व्हीकल इशू? द पॉइंट ऑफ डेमो व्हीकल इज दैट एज अ डीलर मुझे जो गाड़ी बेचनी है, लेट अस से आई एम अ डीलर ऑफ होंडा। अब होंडा के जो भी व्हीकल्स के मॉडल्स है, जनरली आई कीप वन मॉडल, वन कार ऑफ ईच मॉडल एज अ डेमो व्हीकल। व्हाट इज अ डेमो व्हीकल? मैं जब उसे परचेज कर रहा हूं मैन्युफैक्चरर से, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट। मैं उसे इसलिए परचेज कर रहा हूं कि जब भी कोई कस्टमर आता है, हर कस्टमर को गाड़ी का फील लेने के लिए ट्रायल करना है। वो ट्रायल के लिए 1-2 किलोमीटर भी चलाता है, काफी बार वो लंबे ड्राइव पे जाता है, काफी बार वो अलग अलग फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ आता है, तो उसको मल्टीपल ट्रायल्स करने रहते हैं। और ऐसे जितने भी कस्टमर्स आते हैं, देर इज नो कस्टमर एटलीस्ट फॉर मोटर व्हीकल जो सिर्फ गाड़ी देख के पसंद करेगा, अनटिल अनलेस उसका सब ब्रांड वगैरह फिक्स करके वो आया है। 99% ऑफ कस्टमर्स विल टेक अ टेस्ट ड्राइव। अब टेस्ट ड्राइव नई गाड़ी की कभी नहीं होती है। नई गाड़ी की नहीं होती मतलब जो मैं बेचने वाला हूं, वो गाड़ी की नहीं होती, क्योंकि अगर मैंने वो गाड़ी चला ली और मैं चलाने के लिए यूज कर रहा हूँ, और वो एक एक 8-10-12 लोगों ने चला ली है, और मैं अब 13वें पर्सन को बेच रहा हूँ, 13वां पर्सन वो कभी नहीं लेता है, सबको लेनी न्यू ब्रांड गाड़ी है। तो हर डीलर क्या करता है, दे बाय वन मॉडल ऑफ ईच व्हीकल फॉर टेस्ट ड्राइव। दिस व्हीकल इज कॉल्ड एज डेमो व्हीकल। नाउ द पॉइंट फॉर दिस डेमो व्हीकल इज कि ये जो डेमो व्हीकल है, ये टेक्निकली मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं, ये मेरा फिक्स असेट है, यानी मैं इसे बेचने वाला नहीं हूं, एटलीस्ट इन नियर फ्यूचर तो नहीं। मे बी पुराना होने के बाद या ये मॉडल आउटडेट होने के बाद मैं क्या करूंगा वो आगे की बात है, बट एटलीस्ट टुडे आई हैव परचेज इट फ्रॉम द व्हीकल मैन्युफैक्चरर फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज अ डेमो व्हीकल टू गिव टेस्ट ड्राइव टू ऑल द प्रोबेबल कस्टमर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, ये टेक्निकली मेरे एक्सेप्शन में नहीं आता है, क्योंकि मैं इसको बेचने नहीं वाला हूँ। अब बेचने नहीं वाला हूं तो इट इज नॉट माई एक्सेप्शन। अब और वो अगर एक्सेप्शन नहीं है तो 17.5 के ब्लॉकेज में आता है। अब इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन था, क्योंकि टेक्निकली भले मैं इसको बेचने नहीं वाला हूं, मगर मैं इसको बिजनेस करने के लिए ही खरीदा हूं। मेरे को इसको कोई अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज करना है। आई वॉन्ट टू डू बिजनेस विद दिस डेमो व्हीकल, क्योंकि मैं जब तक डेमो व्हीकल में टेस्ट ड्राइव नहीं दूंगा तब तक कोई मेरे बाकी के व्हीकल्स नहीं खरीदेगा। सो इस पे देयर वाज लॉट ऑफ डिस्प्यूट फॉर विच नाउ वी हैव अ सर्कुलर विच सेज, एज डेमो व्हीकल्स आर यूज्ड by authorized dealer to provide trial run and to demonstrate features of the vehicle to buyers. It helps the buyers to make a decision to purchase a particular kind of vehicle. Therefore, as demo vehicles promote sale of similar type of vehicles, they can be considered to be used by the dealer for making further supplies. So भले आप वो बेचने नहीं वाले हो, मगर क्लैरिफिकेशन से हम ऐसा ही मानेंगे कि आप उसको बेचना चाहते हो, और क्योंकि आप उसको बेचना चाहते हो हम ऐसा मानेंगे, that is why we will allow it. I hope you are getting this point. In other words, the credit of demo vehicle is allowed. तो इधर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी दिया है, whether
where demo vehicles are used by authorized dealer for purchases other than for making further supply, say for transportation of its staff employee, then ITC is not available. तो जहां पे आपने डेमो व्हीकल जो खरीदा है उससे अब आप क्या कर रहे हो, वही काम कर रहे हो जो कंपनी करती है, अपने स्टाफ का ट्रांसपोर्टेशन, तो ITC इज नॉट अवेलेबल। पर जहां पे आपने वो खरीदा है जिसमें आपका इंटेंशन है उसको यूज करना फॉर मार्केटिंग, ताकि आप लोगों को उसमें टेस्ट ड्राइव दो जिससे कि वो गाड़ी खरीदे, दैट इज वाई they are in that case they are saying credit will be allowed. So where you are using ITC, demo vehicles for गिविंग टेस्ट ड्राइव्स, क्रेडिट इज अलाउड। अब बाकी किसी और पर्पस के लिए यूज करोगे तो फिर क्रेडिट विल बी ब्लॉक्ड। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर एक्चुअली यानी ये जो पॉइंट है वो तो क्लियर हो गया, बट थोड़ा सा अलग पूछना था, पूछ सकती हूँ? हम्म। सर एक्चुअली, सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना? यस सर, सब्जेक्ट हाँ से हाँ, बस रिलेटेड। सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हो, टेल मी। सर जैसे कि अभी इसमें लिखा हुआ था कि अगर डेमो व्हीकल एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेंगे तो आईटीसी नॉट अवेलेबल। मानो कि अभी नई कार परचेज करी और कस्टमर्स को डेमो, अरे क्या बोलेंगे, यानी डेमो देने के। आपने इनिशियली खरीदा और आप उससे कस्टमर्स को डेमो दे रहे हो, टेस्ट ड्राइव यस दे रहे हो, और वो यस। थोड़ी पुरानी होने के बाद अब आप उसको अपने एम्प्लॉयज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हो, करेक्ट? हाँ, तो क्या आईटीसी रिवर्स हो जाएगा ऐसा? करना पड़ेगा आफ्टर 2 ईयर। समझो आपने 2 साल तक उसको डेमो, सी प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली यही होता है कि यू परचेज दीज व्हीकल्स, जब कोई नया मॉडल आता है यू परचेज दैट नया मॉडल, यू यस सर। यूज इट फॉर गिविंग टेस्ट ड्राइव। अब वो यूज करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो नया मॉडल बहुत ही पुराना हो जाता है। अगर आप उस पुराने गाड़ी में किसको टेस्ट ड्राइव दोगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उनको गाड़ी जो दिख रही है वो पुरानी दिख रही है, ठीक है? हम्म। डेमो व्हीकल शुड ऑल्सो अपियर टू बी अ न्यू व्हीकल। कोई जब टेस्ट ड्राइव लेता है तो उसको नई गाड़ी वाला फील आना चाहिए। यस सर। अब ये आप गाड़ी को 1.5-2 साल तक अगर आप जब डेमो व्हीकल की तरह यूज करते हो तो एक टाइम के बाद वो एक तो मॉडल भी आउटडेट हो हम्म गया है, नए मॉडल्स आ गए हैं, या वो गाड़ी यूज करके पुराना हो गया है, तो प्रैक्टिकली ये लोग क्या करते हैं, देन दे एक्चुअली ईदर सेल द व्हीकल सेकेंड हैंड कम प्राइस पे, यस स्टिल सर। आईटीसी इज अलाउड क्योंकि आपने बेचा ही है अल्टीमेटली, यस यानी सर। आपका वो। पर काफी बार ये लोग उसे पर्सनल यूज में ले लेते हैं, पर्सनल यूज मतलब बिजनेस यूज में, कि भाई हम्म। फिर वो अपने बिजनेस में आने जाने के लिए यूज कर रहे हैं, या तो खुद के या अपने स्टाफ के। यस The सर। moment you do that, it gets covered in 17.5 blockage. यस सर। So in So short, in case आपने ये डेमो suppose व्हीकल्स को, जस्ट लेट मी कंप्लीट, सो इन शॉर्ट आपने डेमो व्हीकल्स को खरीदा है, तो एंड में जब आपका इसका यूज पूरा हो जाएगा एज डेमो व्हीकल, तो आपने इसको बेचना ही चाहिए। इनडायरेक्टली ये सर्कुलर ही कहना चाहता है, करेक्ट? यस सर। यस मिताली, यू आर सेइंग समथिंग। सर प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स होगा या कंप्लीट? सी, दीज आर दोस ब्यूटिफुल क्वेश्चंस जिसका किसी सर्कुलर ने कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं दिया। एंड दिस इज वेयर वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑलवेज रेलेवेंट एंड इन डिमांड। मुझे काफी लोग बोलते हैं, काफी बार डाउट्स पूछते हैं कि सर इतना एआई बढ़ रहा है, या अभी जीएसटी आके 7-8 साल हो गए, सारे सर्कुलर्स ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो अब हमारे पास क्या स्कोप है? डोंट वरी, अभी तक जीएसटी लॉ 10% ही क्लैरिफाई हुआ है, 90% चीजें। इनफैक्ट ऐसा होता है ना कि आप जब एक क्लैरिफिकेशन देते हो, जैसे अभी आपने ये जो क्लैरिफिकेशन दिया ना, इसने अभी अगला क्वेश्चन रेज किया कि भाई मैंने 1-2 साल इसको पहले डेमो किया और बाद में मैंने इसको अपने एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया, तो क्या होगा? आपने इस सर्कुलर में दोनों का आंसर दिया है, डेमो का आप बोल रहे हो क्रेडिट अलाउड, और एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करना है तो सेम सर्कुलर से क्रेडिट इज नॉट अलाउड। तो ये तो आपने आंसर दे दिया, पर आपने इसका आंसर नहीं दिया कि जब 2 साल यूज करने के बाद होगा तब मैं क्या करूंगा। तो फिर जैसे मिताली ने क्वेश्चन पूछा कि सर फिर क्या वो प्रपोर्शनेट डिसअलाउ होगा, सर्कुलर ने आंसर नहीं दिया, तो पीपल विल कम टू यू एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एंड दैट इज वेयर योर प्रोफेशनल एक्यूमेन वुड बी पुट टू टेस्ट। अब इसमें as a rational consultant, what you should do an overall understanding of the subject, कि भले एक्सप्रेसली ये पॉइंट कहीं पे भी लॉ में नहीं लिखा है, तभी तो लोग आपसे सवाल पूछने आए, लिखा रहता कोई सर्कुलर में आ जाता तो लोग आपके पास नहीं आते थे। आपका काम क्या है? अंडरस्टैंड हाउ द लॉ इज डिजाइन, अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक विथ विच अदर प्रोविजंस आर मेड। तो वो जो दूसरे प्रोविजंस का लॉजिक है वो हम यहाँ पे अप्लाई करते, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज
हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो जहां पे क्लियरली कुछ नहीं दिया होता है, वी शुड डू हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। अब हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से मैं आपको मेरा व्यू बता रहा हूं, बिकॉज इट इज नोवेयर गिवन इन एनी सर्कुलर और एनीथिंग। आई बिलीव मिताली व्हाट यू आर सेइंग शुड बी डन। मेरा जैसे अभी बाकी के अगर मैं सारा पूरा जीएसटी लॉ पढ़ता हूं तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ द लाइफ ऑफ एनी एसेट इज 5 years। आई टेक दैट लॉजिक कि मैं 2 साल का क्रेडिट, जो समझो ना जब तक मैंने इसको डेमो की तरह यूज किया था, अपने पास रखूंगा, और प्रपोर्शनेटली 3 साल का जो क्रेडिट है वो मैं रिवर्स करूंगा। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो मेरे पास जब भी ये क्वेश्चन के लिए आए हैं कंसल्टेंसी के लिए, दिस इज व्हाट आई हैव आंसर्ड देम। अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. Sir, if according to your logic, if we convert it after 5 years, so all ITCA is allowed, right? अलाउड, यस, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज सी, आई एम गिविंग यू द लीगल बेसिस ना। हम अभी आगे एक सेक्शन पढ़ने वाले 18, जो इसके आगे वाला स्पेशल केस है। आपको याद रहेगा तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था 3 सेक्शन है, 16 इज मदर, 17 इज फादर एंड 18 इज योर सिबलिंग्स। तो मदर से हम मिल चुके लास्ट लेक्चर में, यस 17 से हम मिल रहे हैं पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में 18 में जब हम जाएंगे तो ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया ना, प्रोपोर्शनेट 5 साल का लाइफ लेके 2 साल का रखना है, 3 साल का रिवर्स करना है, ये 18 में दिया है, बट फॉर अदर केसेस। तो मैं वहीं से लॉजिक ड्रॉ कर रहा हूं। अब उन्हीं केसेस में अगर 5 साल बाद अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो क्या होगा, मेरा प्रोपोर्शनेट अमाउंट मैं करूंगा फिर भी तो भी वो जीरो होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस बेटा? Yes, sir. So my understanding for your cases, if I start using it in my business for doing my business, like using it for employees or for my owner's transportation traveling, जो कि 17(5)(a) में ब्लॉक हो जाता है, पर अगर मैं 5 साल बाद करना शुरू करूंगा तो इफेक्टिवली मुझे रिवर्सल जीरो आएगा बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन। ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सर। ये बार बार थैंक यू मत बोलो प्लीज। ओके सर। सी वी आर हियर टू अंडरस्टैंड, सो वट एवर आर योर डाउट्स आप पूछो, मैं उसका आंसर दूंगा। आप हर क्वेश्चन के आंसर क्या थैंक यू बोलोगे ना, तो मुझे भी फिर हर बार मेंशन नॉट या वेलकम ही बोलना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। सो वैसा मत करो, लेट अस बी वेरी प्रोफेशनल, लेट अस बी क्लियर इन आवर डिस्कशन। नाउ this was the first category of blockage in 17(5) which covered 3 different clauses A, B and BA। तीनों को साथ में कवर हो गया। Sorry, I think A, AB and B, something like this. So 3 clauses are covered. It covered motor vehicle, vessels, aircraft. Now we come to the next category, which is relating to certain items, जिसको ब्रॉडली इन्होंने नाम दिया फूड, बेवरेज, आउटडोर केटरिंग एक्सेट्रा, जिसका डिटेल लिस्ट यहाँ पे है। वापस सेम पॉइंट, अगर आपने ये सारी चीजें खरीदी है, क्रेडिट ऑफ दिस इज ब्लॉक्ड, पॉइंट नंबर 1। हाउएवर एक्सेप्शन क्या है, जहां पे आप इससे बिजनेस कर रहे हो, या जो अब हमने सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जहां पे आप इससे कमाने वाले हो, क्रेडिट इज अलाउड। अब आप इससे कैसे कमा सकते हो, लेट अस अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले कौन सी चीजें हैं, आपने क्या खरीदा है, फूड बीवरेज, आपने केटरिंग सर्विस ली है, आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया है, आपने हेल्थ सर्विसेज लिया है, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी लिया है, या आपने लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। अगर आपने ये सारे सर्विसेज लिए हैं, क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। और इसमें जो हमारा जनरल रूल है कि ये क्रेडिट कब अलाउ होगा, जब आप इसी से पैसे कमाने वाले हो या आप इसी से बिजनेस करने वाले हो। अब आप इसी से बिजनेस कब करोगे, जब आपका सेम लाइन ऑफ बिजनेस होगा। भाई माय बिजनेस इज रनिंग अ ब्यूटी पार्लर, अ सैलॉन, तो मैंने जो भी खरीदा है वो क्यों खरीदा है, ताकि मैं उसको सैलॉन में यूज कर सकूं। सिमिलरली मैंने फूड आइटम्स क्यों खरीदे, बिकॉज आई एम रनिंग अ आउटडोर केटरिंग सर्विस। तो जहां पे मेरा आउटडोर केटरिंग सर्विस है, या मेरा किसी बड़े होटल में आई एम रनिंग अ रेस्टोरेंट, जहां पे मेरा जीएसटी रेट रेस्टोरेंट का 18% है, जहां पे मुझे आईटीसी मिल सकता है, सो मुझे फूड बीवरेज का क्रेडिट मिलेगा। फिर जहां पे मैंने इंश्योरेंस सर्विस इनवर्ड लिया है, क्योंकि मेरा आउटवर्ड भी इंश्योरेंस ही है, आई एम इंश्योरेंस कंपनी ओनली। सो जहां पे भी मैं इन इनपुट से ही मेरा आउटवर्ड सप्लाई करने वाला हूं। अब वो आउटवर्ड सप्लाई या तो सेम टू सेम यही है, या वो कॉम्पोजिट सप्लाई है, जिसमें ये भी मेरा एक आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट है, पार्ट ऑफ सम कॉम्पोजिट सप्लाई। So in all that case, if my outward supply is including these items,
यानी मैं इन्हीं से बिजनेस कर रहा हूं, जो मेरा पहला सेंटेंस था, या अब मैंने जो मॉडिफाई किया, मैं इन्हीं से कमाने वाला हूं, तो आईटीसी इज अलाउड। तो दिस इज द फर्स्ट जनरल एक्सेप्शन जो पूरे 17(5) में। प्लस सेकंड, जो यहाँ पे एक स्पेशल एक्सेप्शन दिया है, जो ऊपर वो मोटर व्हीकल के हायरिंग में भी आया था, वो क्या था, जहां पे मैंने इन चीजों को क्यों परचेज किया है और मैं क्यों ये खर्चे कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉयर, और मुझे ये खर्चे करने हैं फॉर माई एम्प्लॉइज, and doing it for my employees is my statutory obligation। वापस एग्जाम्पल, मुझे एम्प्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस निकालना इज द लॉ ऑफ माय स्टेट, या मुझे एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ केयर में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना इज कंपल्शन, या ब्यूटी ट्रीटमेंट, मेरा नेचर ऑफ प्रोसेस ऐसा है जिसमें जो मेरे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके स्किन में डैमेज हो रहा है, उनका फेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उनका हेयर फॉल हो रहा है, एंड अगेन एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन मुझे उनका ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाना। ब्यूटी ट्रीटमेंट मीन्स जो भी है उनको वापस ठीक करना है, विच रिक्वायर सम ब्यूटी ट्रीटमेंट। सो इफ एनी ऑफ दीज थिंग्स इज माय स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, वो मेरे बिजनेस में जो लॉज एप्लीकेबल है उसमें ये करना कंपलसरी है। या जैसे अभी फूड है, आउटडोर केटरिंग है, मुझे मेरे एम्प्लॉयज को दिन में एक बार दो बार का मील देना कंपलसरी है। इट इज लेट अस से सम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इसलिए आई एम रनिंग सम कैंटीन जहाँ पे मैं फूड बेवरेज खरीद रहा हूँ, या आई हैव हायर्ड अ केटरर जो मेरे इधर टाइम टू टाइम आके फूड दे के जाता है। इन ऑल दीज केसेस ITC will be allowed. So when ITC is allowed for these blocked items, एक जो अपना जनरल रूल है पूरे 17(5) में, क्या, जब मैं इन्हीं से बिजनेस करूंगा, यही मेरा बिजनेस है, यही चीज प्रोवाइड करना, या दूसरा इन्हीं से मैं पैसे कमाऊंगा, क्रेडिट इज अलाउड। और सेकंड जो यहाँ पे है, वेयर why I am making these expenses, because doing these expenses for my employees is a statutory obligation of some law applicable to me. So when any of these happens, one of these two happens, credit is allowed. Otherwise, if I'm doing any of these expenses, credit is blocked. This is clear to everyone? सर अगर कंपनी की खुद की ही पॉलिसी इस तरीके की है कि, हेलो, Yes, beta, I'm listening to you. जैसे कि अभी आपने बताया यानी स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो वो कंपलसरी करना ही है। और अगर कंपनी की खुद की पॉलिसी है कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस करवाना ही है, तब भी हम इसको इसमें कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? Because in that case, it is only a contractual obligation. आपने यस। अपने एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप उसको ऐसा प्रोवाइड करोगे, पर ओ, किसी लॉ ने आपके ऊपर वैसा कंपल्शन नहीं डाला, देन इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इट इज ओनली अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, एंड इन दैट केस आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। सिमिलरली और आप क्या खर्चा कर रहे हो, यू आर डूइंग मेंबरशिप ऑफ एनी हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब्स, फिटनेस सेंटर, और वापस ये खर्चा ब्लॉक्ड है, बट अगेन व्हाई यू आर डूइंग इट, बिकॉज अपने एम्प्लॉयज को ये सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सम लॉ, अगेन क्रेडिट इज अलाउड। सी, मैंने आपको एक लॉजिक बताया था स्टार्टिंग में, इन चीजों में क्रेडिट डिसअलाउ करने का एक मेजर रीजन क्या है। एक तो ठीक है गवर्नमेंट को नेगेटिव लिस्ट में डालना, वो तो एक हो गया, बट लॉजिक क्या है, अगर मैं आपको, आपने अगर ऑब्जर्व किया रहेगा तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, समवेयर आई बिलीव इट, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, दैट द गवर्नमेंट फील्स कि ये सारे खर्चे पर्सनल नेचर के हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ओनर ऑफ द बिजनेस खुद का या अपने फैमिली मेंबर्स का ये पर्सनल एक्सपेंस कर रहा है, और उसे जानबूझ के इट इज शोइंग इन बिजनेस, ताकि उससे उसका बिजनेस में बेनिफिट मिले। क्या बेनिफिट, इनकम टैक्स में वो खर्चा दिखेगा तो उतना बिजनेस इनकम कम होगा, टैक्स कम आएगा, इनकम टैक्स, एंड जीएसटी में फायदा ये होगा कि जो भी इसको अवेल करते होगा, आई एम टेकिंग पेइंग द जीएसटी, मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो इन सारे खर्चों में वो पॉसिबिलिटी है। But I personally see, even though I'm saying कि this is what is my understanding कि this could be a reason why they have blocked these items. But if you ask me, मुझे personally ये इतना ज्यादा convincing नहीं लगता reason. If the this entity is like a company, a corporation,
तो वो कहाँ से पर्सनल एक्सपेंस कर सकता है? उसमें ये जो भी खर्चे होंगे वो उसके बिजनेस का ही पार्ट है. बट समहाउ, at least as on date, the logic of the law or the lawmakers is something else. So we go by that. Now, we come to the next two clauses, 17.5C and 17.5D. दोनों क्लॉज सिमिलर चीज से डील करते हैं. वो क्या है? जहां पे आपको अपने बिजनेस के लिए कोई इमोबल प्रॉपर्टी चाहिए. लाइक इन माय केस, आई एम I means as a chartered accountant, I will need a office space. Yeah, if somebody is a trader, that person will need a shop, a warehouse. If somebody is a manufacturer, the person will need a factory, a godown, a warehouse. अब ये सारी चीजें are immobile property, and I have two possibilities. Either I will hire a works contractor जो मुझे बना के देगा. अब हायर करना मतलब क्या? कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे जाके मैंने वो ऑफिस बुक कर दिया, शॉप बुक कर दिया, या मैंने किसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जिसने मुझे वो ऑफिस का बिल्डिंग बना के दिया, या मुझे शॉप बना के दिया, या मुझे फैक्ट्री बना के दिया. दिस इज क्लॉज डी. क्लॉज डी इज जहां पे ये कंस्ट्रक्शन मैं खुद कर रहा हूं. मैं खुद कर रहा हूं मतलब I am purchasing the goods and services and I am hiring the laborer जो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे. यानी जहां जो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है सेल्फ कंस्ट्रक्शन. अब सेल्फ कंस्ट्रक्शन मतलब मैं खुद बनाऊंगा ऐसा नहीं है. इट सिंपली मींस मैंने किसी बाहर वाले को ये कॉन्ट्रैक्ट देने की जगह पे सीमेंट मैं ला रहा हूँ, स्टील में ला रहा हूँ, सारे एम्प्लॉय मीन सारे वो जो वर्कर्स है जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उनको मैं हायर कर रहा हूँ, एंड आई एम मेकिंग इट माई सेल्फ, जिसको इन्होंने बोला है सेल्फ कंस्ट्रक्शन. नाउ दोनों क्लॉजेस में बाकी सारे पॉइंट्स कॉमन है एक्सेप्ट दिस फर्स्ट पार्ट कि क्लॉज सी कब आता है? व्हेन आप बाहर वाले से सब कुछ बनवा के ले रहे हो, यानी आपको एक ही बिल आएगा बाहर वाले का, विच इज ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. सेकेंड, आपके पास 50 बिल आएंगे, सीमेंट का अलग, ब्रिक्स का अलग, पेंट का अलग, टाइल्स का अलग, किसी इंजीनियर का अलग, किसी आर्किटेक्ट का अलग, बिकॉज आपने सबको हायर किया है, आपने सारी चीजें खुद परचेज करके आप खुद ये बनाने वाले हो. दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी. Other than this, everything is same. Yes, Mansha, I'll explain that. Give me some time. Let me first cover the basic part. Now, in this C and D, the basic point is your expenditure is for an immovable property. अब पहली बात, अगर मैं कोई इमोबल प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो सबसे पहली बात, क्या मुझे उस पर जीएसटी लगता है? आंसर इज यस, इफ यू आर नॉट परचेजिंग अ रेडीमेड प्रॉपर्टी. तो जो ऑलरेडी रेडी प्रॉपर्टी है, फिर वो शॉप हो, ऑफिस हो, या कोई फैक्ट्री प्रेमाइसिस हो जो रेडी है, कंस्ट्रक्टेड है, आप वैसा कुछ परचेज करते हो तो इट इज शेड्यूल 3 ट्रांजेक्शन, देयर इज नो जीएसटी. पर जहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन में आप बुक करते हो या आप कंस्ट्रक्शन करवा के लेते हो, विच इज कॉल्ड एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस सामने वाला आपको जीएसटी लगाएगा ही. और जब सामने वाला आपको जीएसटी लगाएगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि वेदर यू विल गेट क्रेडिट और नॉट. तो वहां पे 17.5 और सी और डी अप्लाई होते हैं. 17.5 सी में आपने पूरा काम किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवा के लिया तो आपको एक ही बिल आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, और डी में सारा आप खुद खर्चा करके खुद आप बना रहे हो तो आपके पास मल्टीपल बिल्स है. अब इन दोनों पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला, ये जो भी आपका एक्सपेंस है, सी हो या डी हो, जिससे अल्टीमेटली इमोबल प्रॉपर्टी कुछ बनने वाली है. अच्छा, अब इंपॉर्टेंट ना, यहाँ पे जो वर्ड बार बार कंस्ट्रक्शन आ रहा है, लेट मी शो यू द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन गिवन. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन काफी वाइड है. इट इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, इट इंक्लूड्स रेनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन, रिपेयर्स, एवरीथिंग. सो इवन रिपेयर्स इज कवर्ड हियर. यानी आप इमोबल प्रॉपर्टी को या तो बना रहे हो, या बने हुए में आप कुछ एडिशंस कर रहे हो, या आप किसी पुरानी वाली में रिनोवेशन करवा रहे हो, अल्टरेशंस करवा रहे हो, या आप सिंपल रिपेयर्स करवा रहे हो. एवरीथिंग इज कवर्ड इन सी एंड डी बोथ. नाउ पॉइंट इज व्हाट, ये जो भी आपका खर्चा है सी या डी का, जो अल्टीमेटली रिलेटेड टू इमोबल प्रॉपर्टी ही है, करेक्ट? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, प्लीज पे अटेंशन,
क्या ये खर्चा आप बुक्स में कैपिटलाइज करने वाले हो या यू आर गोइंग टू राइट इट ऑफ टू P&L? इफ यू आर गोइंग टू राइट इट ऑफ टू P&L, क्रेडिट इज फुल्ली अलाउड। 17(5) C एंड D दोनों ब्लॉक नहीं करने वाले। सो ये रिपेयर्स है, ये रेनोवेशन है, ये कुछ तो अल्टरेशंस है विच यू आर राइटिंग ऑफ इन योर बुक्स। फिर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर से करवाया हो या आपने सारी चीजें लाके खुद किया हो, इन ईदर केस क्रेडिट इज फुल्ली अलाउड इफ you are writing it off to P&L. If you are capitalizing it, then comes the next point. अगर आप इसे कैपिटलाइज करने वाले हो तो क्या ये खर्चा प्लांट एंड मशीनरी है? अगर ये खर्चा प्लांट एंड मशीनरी है तो कैपिटल होने के बावजूद, कैपिटलाइज करने के बावजूद द क्रेडिट विल बी अलाउड। सो अगेन टू पार्ट्स, whether it is revenue, whether it is capital. If it is revenue, fully allowed. कुछ मत देखो plant and machinery क्या, it is fully allowed. If it is capitalized, फिर दो parts. Is it plant and machinery? Yes, credit is allowed. If it is not plant and machinery, फिर वापस क्या चेक करना है, जो अपना गोल्डन रूल है, क्या आप इसी से बिजनेस करने वाले हो, क्या आप इसी से पैसे कमाने वाले हो, क्रेडिट इज अलाउड। आंसर इज नो। आप इसे सिर्फ बिजनेस में यूज करने वाले हो, जैसे मैं फैक्ट्री क्यों बना रहा हूँ, मैं उधर बिजनेस करने वाला हूँ। मैं ऑफिस क्यों खरीद रहा हूँ, शॉप क्यों खरीद रहा हूँ, क्योंकि मैं वहां पे बिजनेस करने वाला हूँ। क्रेडिट इज नॉट अलाउड। सो ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग or of your shops or your godowns or your offices, credit is not allowed। क्योंकि पहली बात वो रेवेन्यू नहीं है, कैपिटल है। कैपिटल में वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी में क्या ये करना आपका बिजनेस है, इसी से आप इसको बेच के या इसको रेंट करके आप पैसे कमाने वाले हो? नहीं, आप उसमें बिजनेस करने वाले हो। सो क्रेडिट इज ब्लॉक्ड। तो एक्सेप्शंस क्या है, क्रेडिट कब अलाउ होगा? एक, आपने उसको रेवेन्यू ट्रीट करके राइट ऑफ कर दिया, क्रेडिट इज अलाउड। कैपिटलाइज किया मगर वो प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिट इज अलाउड। प्लांट एंड मशीनरी नहीं है मगर वही बना के बेचना या भाड़े पे देना, यही आपका बिजनेस है, क्रेडिट इज अलाउड। When credit is not allowed is when you are going to use it in your business. Anybody has any questions or doubts in this? Sir, here we're talking about only on owned property, or it's cover also lease and rent, other things. See, here we are talking about the property which we are purchasing or constructing. It means it is owned property. If you have taken on lease, that is, you have paid the rent of that property. Anyways, tell me one thing, whether rent will be revenue or capital. The rent is allowed. I understand that, but sometime what happen if we taken on a lease a property for 10 years, like so we construct we do renovation according to our use also. So we are converted in a every year some part of that we Correct. Then so that is covered here. That is covered then here. So cover here. whatever you have done is now in that lease property, you have done some construction, renovation, correct? Yes, sir. Now that will be covered here. Now you check whether you have treated it as revenue and written off. If yes, allowed. If you have not written it off, capitalized, then check whether it is plant and machinery. We are going to see the definition of plant and machinery. Yes, allowed. If no, not allowed, because anyways, it is not your business of constructing and giving. You are using it in your own business. Credit is not allowed. Correct? Okay, sir. Now, what is the definition of plant and machinery? Plant and machinery means apparatus, equipment, machinery fixed to earth by foundation structural support that are used for making outward supply of goods and or services and include such foundational or structural support. So simply, what is plant and machinery? Plant and machinery means the machines or equipments that you are using. One. Second, the foundational civil support. This is the construction part. So where your construction part is something which is necessary for the running of the machine. Please understand. Like many times people argue कि sir factory का क्यों नहीं मिलता है credit?
फैक्ट्री में ही तो हम मशीन रन करते, फैक्ट्री में ही तो मशीन रख के काम करते, मगर क्या फैक्ट्री जरूरी है मशीन चलाने के लिए? आंसर इज नो। आप मशीन को कहीं पे भी रखोगे, आपने उसका प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, मशीन चलेगी। मशीन विल इवन रन इन ओपन। We need factory building just for protecting our goods, for protecting our machines, for protecting our people from weather, from environment. कि बाहर धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, कुछ भी हो, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। ना आपके लोगों को तकलीफ होनी चाहिए, ना आपकी मशीन्स खराब होनी चाहिए, ना जो मटेरियल आपका यूज हो रहा है वो डैमेज होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। दैट इज, इट इज ओनली फॉर using it as a shelter, as an accommodation for your machines, your material, and your people. It has nothing to do with the functioning of the machine, where the structural design is such that it is necessary for the functioning of the machine. उसके बिना मशीन फंक्शन ही नहीं कर सकता है, then that is what is planned, and that is where the credit is allowable because it becomes necessary for the functioning of the machine. Until and unless that structure, that construction is utmost necessary for the functioning of the machine, the credit will not be allowed. Am I clear with this? Sir, here also we're using services, right? If a company providing consultancy services like that, we need laptop, all that is all covering plant and machinery. But the desk or other equipments are also covered or not? नहीं बेटा, सी, कंसल्टेंसी यहाँ पे कवर नहीं होने वाला है। रीजन, whether all these you are talking about laptops and desktops and computers, correct? Yes, sir. Is it becoming immobile property? No, sir, but construction of like a laptop is also, I understand, but sometime in a company construction is like that, they fix सर जैसे डेस्कटॉप बैठने के लिए वहां पे उसी अकॉर्डिंग बना देते हैं मैं क्या लाइक बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ टेम्परेरी आपकी बात। मेरा सिंपल सवाल आपसे है, क्या वो मूवेबल है या इमूवेबल है? इन केस इमूवेबल हुआ वो कैसे? परमानेंट। कभी नहीं होता बेटा परमानेंट। कोई भी जगह जो आपने बनाई है, इट इज अ फर्नीचर, करेक्ट? सर मैं अब फर्नीचर की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक टेम्परेरी हम लोग रूम्स को सेपरेट कर देते हैं या उसको इस तरह वो से कंस्ट्रक्शन है बेटा, वो कंस्ट्रक्शन है। तो फिर आप उसको लैपटॉप से क्यों मर्ज कर रहे हो? उसका लैपटॉप से कोई संबंध ही नहीं है ना। आपने मुझे लैपटॉप और डेस्कटॉप कहा, करेक्ट? यस सर। रूम्स तो आप क्यों तो बना वो रहे हो? क्योंकि आपको लोगों को अलग अलग जगह पे बिठाना है, आपको बीच में पार्टीशन करना है, सो यू हैव पुट सम पार्टीशन वॉल टू मेक अ बिग हॉल, स्मॉल स्मॉल रूम्स, करेक्ट? यस सर। तो बेटा वो तो कंस्ट्रक्शन ही हो गया, उसका लैपटॉप और किसी से कोई संबंध नहीं है। सर तो वो सर्विसेज देने के लिए कंपलसरी है कि जैसे क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट स्पेस पे या नहीं, दैट वाज इंक्लूडेड और नॉट? वो यहाँ पे आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो ब्लॉक्ड में आने वाला है, ओके सर। करेक्ट? एम आई क्लियर बेटा? आप अगर यस ये सर। पढ़ रहे हो, दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, आप ये पढ़ रहे हो यस सर। बेटा? ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जो प्लांट एंड मशीनरी है, और प्लांट एंड मशीनरी में पहले वो इमोबल प्रॉपर्टी है। सी, हमारा पॉइंट क्या है? अगर आप जो बना रहे हो, जो खर्चा कर रहे हो, वो इमोबल प्रॉपर्टी, तो क्रेडिट अलाउड नहीं है। जैसा मैंने आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है, रेवेन्यू है तो क्रेडिट अलाउड, कैपिटल है और उसमें प्लांट एंड मशीनरी है तो भी क्रेडिट अलाउड। तो पहले वो कैपिटलाइज है, वो इमोबल प्रॉपर्टी है, और फिर आप देख रहे हो कि क्या वो प्लांट एंड मशीनरी है। अब प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला है कि जो चीज इमोबल प्रॉपर्टी है, वो प्लांट एंड मशीनरी कब बनेगी? या तो वो आपका एपरेटस इक्विपमेंट होना चाहिए, या वो मशीन है जो फिक्स टू अर्थ है, कैसे? बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और अब मैं आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया उसको आप आपके लैपटॉप वाले केस में भी अप्लाई करो। क्या वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट लैपटॉप को चलाने के लिए चाहिए क्या? आंसर इज नो। मुझे लैपटॉप डेस्कटॉप को चलाने के लिए कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मैंने बैठने के लिए, मैंने मेरे कंफर्ट के लिए जो भी बनाए रहेंगे, वो सिर्फ मेरे बैठने और यूज करने के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दैट मशीन।
तो जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट मशीन के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, जिस स्ट्रक्चर के बिना मशीन फंक्शन ही नहीं कर सकता, ओनली दैट स्ट्रक्चर इज प्लांट, वही एलिजिबल है। करेक्ट। यस सर। नाउ कुछ चीजों को इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी में से एक्सक्लूड कर दिया है। ओपन लैंड एक्सक्लूडेड है, बिल्डिंग्स जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग्स वगैरह एक्सक्लूडेड है। कोई भी दूसरा सिविल स्ट्रक्चर, यानी जो आपने कंस्ट्रक्ट करके बनाया है बट विच इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन और फंक्शनिंग ऑफ मशीन, दैट इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, यानी वो भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। शॉकिंगली ये चीज से मैं कन्विंस नहीं हूं, बट फाइन, इट इज देयर इन द लिस्ट, कि अगर आप एक टेलीकॉम कंपनी हो लाइक आइडिया, एयरटेल, वी आई, जो भी नाम है अभी, ये सारे कंपनीज का सबसे बड़ा खर्चा उनके टावर्स पे होता है, क्योंकि विदाउट टावर्स द सिग्नल्स कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनफैक्ट आज बहुत सारे कंपनीज अपने मार्केटिंग में यही आपको बताते हैं कि एवरी आर वी आर इंस्टॉलिंग सो मेनी टावर्स। अब एक एक टावर बनाने में जो जो बड़े वाले टावर्स बनते हैं, जो जमीन से लेके अराउंड इट गोज टू 100-150 फीट्स, ये टावर्स, एक एक टावर बनाने पे देर इज एक्सपेंसेस विच इज रनिंग इन करोर्स, हंड्रेड्स ऑफ करोर्स, एंड ऑब्वियसली फिर उसके साथ जो उसका आईटीसी आता है वो भी करोर्स में आता है। आई बिलीव दिस शुड हैव बीन अलाउड, उसको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी से एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए था, बट फॉर द टाइमिंग इट हैज बीन एक्सक्लूडेड, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। सिमिलरली पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, दिस इज व्हाट दे आर क्लैरिफाइंग, तो इसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको 17.5 सी और डी का पूरा पॉइंट समझ में आया? गुड। नाउ I will request Mansa to discuss with us the very recent decision by Safari Retreat. Yes, Mansa, can you throw some light on this decision? Mansa, beta, Mansa, where is she? She had asked this question. I don't know where she is. Okay, ठीक है. I'll keep this point pending. Let her come so that we can have this discussion. So this is, students, what is 17.5 C and D. Now, this point, interestingly, these two clauses have one small difference. In 17.5 C, the word uses plant and machinery. In 17.5 D, the word uses plant और machinery. और अब इसी के ऊपर ये बहुत बड़ा अभी का डिसीजन आया है ऑफ सफारी रिट्रीट। बट ये डिसीजन आने के बाद इमीडिएटली अभी जो 2 दिन पहले काउंसिल मीटिंग हुआ, in that 55th GST Council meeting, they have decided to correct this. They have said that this is a typographical error. Law लिखते वक्त, बनाते वक्त नहीं, लिखते वक्त टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, क्योंकि क्लॉज सी में द वर्ड यूजेस प्लांट एंड मशीनरी, क्लॉज डी में द वर्ड यूजेस प्लांट और मशीनरी। सो ये जो टाइपोग्राफिकल एरर है, इसे करेक्ट किया जाएगा, एंड दिस करेक्शन वुड बी मेड रेट्रोस्पेक्टिव, यानी अब से क्लॉज डी में भी प्लांट और मशीनरी की जगह पे प्लांट एंड मशीनरी यूज होगा। दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर काउंसिल मीटिंग, एंड मे बी अभी जो बजट आएगा, बजट में एक बार में ही इसका पूरा डिस्कशन होगा। सो दिस इज अ वे बाय विच दे आर ट्राइंग टू ओवरराइड द डिसीजन विच वाज टेकन इन सफारी रिट्रीट। अब किसी ने आज लेक्चर के स्टार्ट में मेरे से पूछा था कि सर ये जो अमेंडमेंट अभी प्रपोज हुआ है काउंसिल मीटिंग का, कि 17.5 D में भी वो प्लांट एंड मशीनरी कर देंगे जो आज प्लांट और मशीनरी है, तो क्या ये हमारे एग्जाम को एप्लीकेबल होगा? तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, आज की तारीख में इस पॉइंट से प्लांट एंड मशीनरी या प्लांट और मशीनरी से हमारे क्वेश्चन के किसी भी आंसर को फर्क नहीं पड़ता है। सो वेन एवर दे डू इट अमेंड इट, वो रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे, मगर टेक्निकली वो आपके एग्जाम को लागू नहीं होता है एज पर द नॉर्मल रूल ऑफ अवर इंस्टीट्यूट, कि जो आपके एग्जाम के 6 मंथ्स के पहले के अमेंडमेंट्स है उतने ही अप्लाई होने वाले। बट
अनदर पॉइंट इज कि ये रेट्रोस्पेक्टिव है। तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मगर फिर वो एप्लीकेबल तो 1 जुलाई से हो गया, तो एक तरह से तो वो पहले से लागू हो गया। बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, आप एग्जाम में एंड और का जो डिफरेंस है, इस पे आज तक भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। रीजन बीइंग कि ये मैटर को कभी किसी ने इतना माइन्यूटली देखा ही नहीं। ओनली इन दिस केस फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल went into that particular detail. In fact, rather the Honorable Supreme Court went into that particular detail कि अच्छा एक जगह पे and है, एक जगह पे और है, and accordingly they gave their final decision. So even if they are amending it retrospectively, at least as far as your exams are concerned, it is not going to affect you. First point. So आप उसको and करके एग्जाम में पढ़ो, या आप उसको फिलहाल टेम्पररी और ही रहने दो, it will not impact you, right? Okay, Mansa is back. So now Mansa is saying, sir, in this Apex code said input rate can be allowed on construction cost for commercial building. Yes, बेटा तो मनशा मैंने आपको एक सिंपल रूल स्टार्टिंग में बता दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वही रूल रिपीट किया है। मैंने आपको सिंपल पूरे 17.5 का एक कॉमन लॉजिक क्या दिया स्टार्टिंग में, जहां पे आप इन चीजों से बिजनेस कर रहे हो, आप इन चीजों से कमा रहे हो, क्रेडिट इज अलाउड। आई बिलीव इनफैक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो अभी आया है कुछ महीनों पहले। मैं ये पॉइंट डे वन से, जब भी मेरे 17.5 के ऊपर या तो ऐसा कोई लेक्चर होता है स्टूडेंट्स का, या सीएस का कोई कॉन्फ्रेंस में मैं बात करता हूँ, या कहीं पे भी वेर एवर आई एम गिविंग माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन बहुत क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग आई विल से 17.5 के बारे में, कि जहां पे भी 17.5 के ब्लॉक में जो भी लिस्ट में आइटम्स दिए हैं, वेर आई एम डूइंग बिजनेस विद देम, जिसको मैं अभी बोल रहा हूँ जहां मैं इनसे पैसे कमाऊंगा, क्रेडिट इज अलाउड। तो बेटा व्हाट यू आर सेइंग कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप इसे रेंट पे दोगे तो आपको इसका आईटीसी मिलेगा। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम डे वन। वेल मनशा बेटा, आई डोंट थिंक जीएसटी काउंसिल हैज नलिफाइड दिस। प्लीज, यही प्रॉब्लम होता है बेटा, वी गो बाय सोशल मीडिया, हम व्हाट्सएप इंडस्ट्री देखते हैं। यू प्लीज गो एंड रीड व्हाट इज गिवन इन द प्रेस रिलीज फर्स्ट। मैं तो प्रेस रिलीज को भी फॉलो नहीं करूंगा, बिकॉज प्रेस रिलीज इज ऑल्सो नॉट लॉ। क्या डिसाइड हुआ है, सी यही प्रॉब्लम हो जाता है कि एक हम बात करते जेनेरिक, जेनेरिक मतलब एक कॉमन मैन की तरह हम बात करते हैं। एंड आई नो फ्रॉम वेयर दिस हैज कम। कोई एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जहां पे किसी प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा, प्लीज वो आप वीडियो वापस ध्यान से सुनिए। किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप सफारी रिट्रीट का डिसीजन आप ओवर रूल करने वाले हो। उन्होंने हाँ ऐसा नहीं कहा है। सिर्फ वो एक ही चीज को एम्फोसाइज क्या कर रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एंड और का डिफरेंस क्रिएट किया है, और ये जो एंड और का डिफरेंस है, इसमें और इज अ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, सो वी विल रेक्टिफाई दैट मिस्टेक रिट्रोस्पेक्टिवली। सो एंड और का चेंज करने की बात कही है। ये जो रेंटिंग वाला आपका पॉइंट है बेटा, इस बारे में कोई बात नहीं की है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सफारी रिट्रीट के डिसीजन में 3 बड़ी बातें बाहर आई है, 3, जिसमें से एक है एंड और का डिफरेंस, जिसको ये लोग बोल रहे हैं कि हम उस और को हटा के वापस एंड कर देंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली कर देंगे। तो 3 बातों में से ये एक बात का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, मैं मानता हूं। बट बाकी जो 2 बातें हैं, जिसमें से आपका ये पॉइंट है अबाउट रेंटिंग, ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि इसको नलीफाई करने ही नहीं वाले। दे आर ओनली गोइंग टू मेक वन चेंज बेटा, एंड और वाला डिफरेंस हटा देने वाले। और वो मैं भी मानता हूं। If you also study the entire GST law, whether it is center or state or of different states, you will find that कि ये हर जगह पे एंड ही यूज किया है पूरे सीजीएसटी एक्ट में। जितनी जगहों पे भी प्लांट मशीनरी वर्ड यूज किया, उसके बीच में एंड यूज किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट 17 जगहों पे, 17 प्लेसेस दे हैव यूज प्लांट मशीनरी, ये दोनों वर्ड्स, और उसमें एंड आया है। सिर्फ एक जगह पे, यहाँ पे 17.5D में और आया है। एंड दिस कुड बी, I believe correctly, it is a typographical error and they are correcting it. But I repeat, beta Mansha, it is good that you are studying uh, you are following up all the amendments. But let me inform you, there is no mention about renting वाला part. So मैंने बताया ना, 3 बड़ी बातें आई है। एक फंक्शनलिटी टेस्ट के बारे में आया है सफारी रिटेड डिसीजन में, एक रेंटिंग वाले पॉइंट के बारे में आया है, और एक एंड वर्सेस और के बारे में आया है। एंड वर्सेस और को ही सिर्फ वो लोग चेंज करने की बात की है काउंसिल मीटिंग में। एंड इफ यू रीड द मिनट्स ऑल्सो, आपको सिर्फ वो एंड वर्सेस और का ही पॉइंट मिलेगा।
रेंटिंग वाला पॉइंट, फंक्शनलिटी टेस्ट वाला पॉइंट, इसके बारे में काउंसिल मीटिंग में कोई भी चेंज करने की बात नहीं हुई है। ठीक है बेटा। आई होप आपको भी ऐसा कुछ मिनट्स में नहीं मिला होगा जहां पे वो रेंटिंग वाले पार्ट को या फंक्शनलिटी टेस्ट वाले पार्ट को चेंज करने की बात कर रहे हैं। करेक्ट ना? यस मनसा, great. But I'm happy that you keep on following the updates. Okay, every time you pitch in with some latest decision, it means you are regularly reading the decisions or you are updated with that. That is what is very good. See, as a student, if you are keeping yourself so much updated, then definitely after becoming a CA, you will be even more updated. And that is really a very good uh, attitude, I will say. Correct? Okay. Chalo. So we'll take a break. Then we'll go to the clarification जो वापस एक सर्कुलर के फॉर्म में आया है। फाइन। सो वी विल टेक ओनली अ 10 मिनट्स ब्रेक टुडे, क्योंकि आज थोड़ा 5 मिनट्स लेट स्टार्ट हुआ था। सो विल टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। सो अराउंड 8:05 वी विल रीजॉइन। इज इट ओके? फाइन। सो
social media gimmick. You please read the council meeting minutes. That is more authentic. And whenever the notification will come, in fact, I don't think there will be a notification, there will be a clarification. So, see, the problem is that nowadays, at least I feel so, media wants more sensational news. So, they are not going for pure news or the genuine news. They are looking for some masala, some sensationalization. So, I was also following that day, whole day. Whenever council meeting happens, I generally follow that. So, throughout the day, the different media channels or the different not channels but handles or social media platforms were highlighting more of the popcorn point, which if you see the whole council meeting minutes, there are so many more points covered. But that is how better today this social media has become. So that is why I always say that we should not, as professionals, rely much on what we get on social media. We should rely more on the authentic news, and that you get from the proper documents. Good. Should we start? So then, now, clarification on availability of ITC on ducts and manholes used in network of optical fiber cables in terms of this particular section. Now, let us first understand what this particular point is. So, the issue is whether the ducts and manholes which are used in network of optical fibers for providing telecommunication services, whether it will be eligible or it will not be eligible. So, see, whenever you are making any of these network or towers, the wiring has to be done through some ducts or the holes that are the underground. The question is whether there will be ITC available on the ducts that are made or the main holes that are made, so that the fiber can go beneath the earth. So what it is said, the OFC network is generally laid down with the use of PVC duct sheets in which OFCs are housed and service connectivity main holes, which serves as node of the network and are necessary for not only laying of optical fiber but also their upkeep and maintenance. So same like your any pipeline, like we have the water pipeline, so it is going underground, but at different places you have the main holes made so that if there is any repair work required or anything required, that main hole can be used as one of the connecting points. So same thing happens with these optical fiber networks. Now the question comes that you have disallowed the telecom tower ITC. You're not considering it as plant and machinery. Now, what will happen for all these ducts and main holes? So, what it is clarified in view of the explanation 17, it appears that duct main holes are covered under the definition of plant machinery as they are used as part of the network for making outward supply of transmission of telecom signals from one point to another. Moreover, ducts and main holes used in network of optical fiber cables have not been specifically excluded from the definition of plant machinery in the explanation to the section, as they are neither in the nature of land building or civil structure nor are in the nature of towers or pipelines, etc. Accordingly, it is clarified that availment of ITC is not restricted in respect of ducts and cables. So they are saying we are not considering it as part of telecom towers and all, and hence it will not be blocked. Fine. Next, inward supplies which are charged to tax under composition. This is simple. So if I'm buying something where my supplier is a composition dealer, even though the supplier is paying 1%, 5%, 6%, but as you know, what invoice he is giving to me is not tax invoice, it is a bill of supply. On that bill of supply, the GST amount is not written. Neither is he uploading GSTR1 where he is showing that 1%, 5% which gets populated in my 2A, 2B. So none of this is happening. Hence, technically also and logically also, any supplies received from a composition supplier will not be eligible for ITC. Next,
inward supplies received by a non-resident taxable person. We call them as NRTP. So when NRTP is receiving any inward supply, he will not be eligible for ITC. The only exception is if the NRTP is importing some goods. Only for that the ITC will be eligible. Other than that, there will be no ITC for any type of inward supplies. Next, inward supplies use intended to be used for the purpose of CSR. Now, this was a very disputed, debatable issue. So, they brought an amendment in the law by adding clause FA in section 17.5 and stating specifically that this credit will not be allowed. Now, we all know you would have studied this in your company law chapter. Maybe you would have come across this in income tax also and even in accounts also. So, these three subjects you would have come across this particular point of CSR, which is corporate social responsibility. So, as you know, as per the company laws, you have to compulsorily spend some percentage of your profit every year on account of CSR, that is corporate social responsibility, where what you are doing is, in very simple words, your charitable type of expense. In very naive words, this is what is CSR. Now the question is, when you are doing something like a CSR, whether the ITC of that expense should be allowed or it should be blocked. So for that, there was a lot of confusion, debate, dispute. Some people were saying it is blocked because of the next clause that we are going to see, that is 17.5H, where it gets covered in gift, etc. And some people said, no, it is not gift because it is an obligation under the Companies Act. So how it can be gift? That is where this particular clause was introduced, which said that you will not be allowed this particular ITC. Correct? Next, 17.5G is very simple and straightforward. If any of your inward supplies which you have purchased and you start using it for personal use, even though originally it was for business, let us say my laptop, mobile phone, these are purchased for my business. I've taken the bill in my firm's name. But if I use it for my personal use, the credit will not be allowed. Now, as far as mobile phone is concerned, logically also, I personally believe nobody should take credit because majority of your own mobile phone is personal only. Some part only will be professional, major part would be personal. And even if you are taking it, you should take only 50%. That is ad hoc. I'm saying there is no rule such like 50%, but that is the most convenient way of handling the expenses on your mobile phones. As far as laptop is concerned, majorly you can say it is majorly for your official use only. Yes, some part of it can be used for entertainment, etc., but that is very negligible. Now comes a very important clause, which again has lot of disputes. You have certain circulars clarifying this. That is what is where ITC is blocked. If you are using the goods as free sample or by way of giving it as gift, or it gets stolen or it is lost, etc. Now ITC will be blocked. So what it is said, ITC is blocked on lost goods, stolen goods, destroyed goods, or goods that are written off, plus which are given or disposed by way of gift or free sample. For all this, ITC is not allowed. Now, reading wise, English reading, it is very simple. It says on gifts, it will not be allowed. On free samples, it will not be allowed. But then there are many issues associated with this. First issue is when I say I have distributed the goods as free sample or given it as gift, the question is, what is gift? Interestingly, gift word has not been defined in the GST law. So we have to look after or look for the definition of gift in other laws. So I find one definition in the Transfer of Properties Act, which defines as transfer of certain existing movable, immovable property made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee and accepted by or on behalf of the donee. So gift is something which is given out of free will. Gift is something which is given under love, affection, or any such reason where it has nothing to do with your business or it is not under any contractual obligation. That is what is gift. Correct? So, in common parlance, gift is something which is made without consideration, is voluntary in nature, and is made occasionally.
It cannot be demanded as a matter of right. This is very interesting. So where something can be demanded, something can be enforced, it cannot be called as gift. Second meaning is of free sample. So again, it is not defined in the GST law. The dictionary meaning of sample is a small part or quantity intended to show what the whole like is. So where, let us say I'm dealing in pens, if I give the same pen which I'm manufacturing and selling, if I give the same pen free to you all so that you all can use it once, you can understand how the pen writes, what is the flow of the ink, how the grip is, etc., etc. Then when I give the same item which I'm going to sell as free item, it is called as a free sample. So in commercial parlance, samples are given to prospective customers. Now this is also interesting. Samples I will distribute only at that place where I will find, or I feel that I will find my customers. Like if I have to distribute pens, I will distribute the pens either in some company corporate setup or maybe somewhere in some colleges where I believe that this pen will go to it the prospective customers. See, understand, that is what is interesting. If I go and distribute pen at such a place where people are illiterate and for them the pen would not be used for writing, they would be using for other household purposes, then that will not be called as a sample technically. Correct? So, under this clause 17.5H, what all things they are disallowing? Goods which are disposed by way of gift, goods that are disposed by way of free sample, which are lost, stolen, destroyed, or returned. Now, in this relation, we have some clarification. And if you remember this particular clarification, we have studied earlier also in two different modules, which they have referred in chapter 1 of supply also and very recently in valuation of supply. What is this point? ITC in the hands of supplier in relation of sales promotion schemes. So what are these sales promotion schemes? Where samples and free gifts are given. So samples which are supplied free of cost without any consideration do not qualify as supply under GST except where it falls in Schedule 1. Now, ITC shall not be available to the supplier on the input service and capital goods to the extent they are used in relation to gifts or free samples which are distributed without any consideration. So this is simple. Whatever goods you are using for giving as free sample or as gift, ITC is not allowed. But when we come to these specific today's, I will say, business models, where you go to a mall, like now in this particular period, generally you find many sales schemes going on. The year-end sale will come, or some when this 26 January will come, you'll find the 26 January sale. So in that you'll find these different types of schemes. First one is buy one, get one free offer. Now, when a supplier is saying that, okay, you buy one piece of pen and the other piece will be free, technically, there is nothing free. Because if it had to be free, I should not have put the first condition that the first pen should be purchased. I should give free directly. So what the circular clarifies, if the scheme is like this, one pay one free, then we will not consider it as free. We will allow you the ITC 17.5H will not apply. Then how we will treat it? We will treat it that for the single price that you have paid, you have got two things. And if these two things are different, we will apply the logic of composite supply or mixed supply. And accordingly, we will levy the tax. So the tax will be levied on that single price. But now the single price would be considered for these two items. So let us say, along with a toothpaste, a toothbrush is given as free. So there is one price which is of toothpaste which is taken from you, let us say rupees 100. But along with that, you are given a 25 rupees toothbrush free. So in this particular case, we will not consider the toothbrush as free. First clarification, it means you can claim ITC of toothbrush 17.5H does not apply. First clarification. Second clarification, this entire 100 rupees which you have paid and for which now you are getting these two things, we will consider these two things as a composite supply or a mixed supply. So we apply the logic of composite and mixed supply. And if we get the answer as composite supply, we take the rate of toothpaste, but it is more of a mixed supply. So then we will take the rate which is applicable to either of the two, whichever is higher for that entire 100 rupees.
Similarly, you have the another business model. Again, you find this in malls or when you do online shopping. Buy more, save more. Now, there is nothing free given over here. It simply is that the more you are buying, like if many times you'll find that if your purchasing is up to 5,000, I'll give you 10% discount. If it is up to 10,000, I'll give you 20% discount. Or if you buy 3 pieces, I'll give you 10% discount. If you buy 5 pieces, I'll give you 20% discount. So this is what is buy more, save more offer. Here, there is no problem with ITC. So this particular point has no impact on 17.5H because nothing is given free. Then comes the point of secondary discounts. Now, this we studied even in relation to valuation also, that where secondary discounts are given, that is post supply discounts are given, then whether it would be reduced from your sales, whether you can get the benefit of reducing it from your sale. So for that, we apply section 15 of your valuation, where it has given certain conditions. And if those conditions are satisfied, especially which condition, that there was a pre-existing contract, and second, where you have given the credit note and the person has also reversed ITC. When both these things happen, then only you can reduce that particular secondary discount from your sales. Again, it is not affecting our ITC part. So 17.5H has no problem with this. Now comes another circular, which is dealing with another practical issue, which is in the pharma sector. Now in pharma sector, what happens? I am the medicine manufacturer. Now, when I'm making a medicine, as per the Drugs Control Act, I have to compulsorily put the expiry date. So let us say I manufacture the medicine today and the expiry date is after a year. That is, it will expire on 25th of December 2025 after 1 year from today. Now, today when I have manufactured it, it will first go to the distributor, from distributor to wholesaler, wholesaler to retailer, and the retailer will sell it in his shop. Now, it may be a possibility that a particular medicine may not get sold by the 25th of December 2025. That is up to its expiry. Now comes a question, what to do for this expiry goods? Because when the goods have expired, obviously this will not be sold. Now what will happen? First, as per the understanding between me and my distributor and the wholesaler and the retailer, either the expired goods will be the property of the retailer, that is, it will be his loss, or my contract may say that the expired goods may be taken back by the manufacturer. So the retailer will return to wholesaler, wholesaler to distributor, distributor will give to manufacturer, and manufacturer will destroy those medicines. So one of these things will happen. Either the retailer himself will destroy it because for him it has now become expired. It is non-marketable and he cannot return it back. If that is the contract, he will destroy it, or it can be returned. So it will come to the manufacturer. Manufacturer will destroy it. Now here main question is, whoever destroys this, let us say if the retailer has to destroy because he cannot return it, or any of the previous persons, generally it would be the manufacturer, if that person has to destroy, the question is what will happen of the ITC which they had availed? Because we have seen in 17.5H, for goods which are lost, stolen, or destroyed, ITC has to be reversed because you have already availed it. So it now becomes blocked. So you have to reverse it. Now, what should we do? For this circular is there. So what it says, such goods which have crossed their date of expiry are colloquially referred to as time expired goods and are returned back to the manufacturer on account of expiry through the supply chain. Generally, they are returned back in 90% of the cases. 10% of the cases, the agreement is such that it will be your loss, that is the retailer's loss. Now, the main point. There are two issues which have been answered in this circular. First, if they have to be returned, how will it come back to the manufacturer? Why? Because see, generally in GST, if I'm making a sale and it has to be returned, which we call as sales return, the general mechanism is a credit note. But again, credit note comes with so many challenges that if I'm raising a credit note, that is, I'm reducing my sales, so you have to reduce your ITC. How I will keep a track on whether you have reduced your ITC or not. So that is always a challenge. Second challenge with credit note is there is a time limit up to which I can issue credit note.
Now, if the time limit has expired, which expires on 30th of November, so for last year sales, last financial year sales, I can issue credit note only by 30th of November. Now, these goods have expired on 25th of December. You will be returning after that. So the date of 30th November is gone. How can I issue a credit note? So this was the challenge. So first question that is answered is how it will be returned back, because credit note may be possible, credit note may not be possible. And second, what will happen to the ITC? The person who is destroying this medicine, it may be the retailer, or in 90% cases, it will be the manufacturer who's going to take back the medicines, who will be destroying the medicine. The question is, whoever destroys the medicine, what will happen of ITC? So both questions are answered. First, what does this circular say? It has clarified that the retailer wholesaler can return the time expired goods either by treating the same as fresh supply or by issuing a credit note. So if credit note conditions are getting satisfied, if it is within time a limit, if the opposite party is reversing ITC, all that, you can issue a credit note, and by that you can take back your medicines. It will appear as a sales return. If you don't want to do that because it has a lot of jhanjat, because there are so many people who are going to return back, how you will keep a track? Better is let the person return it back to you showing his sale. So retailer will show a sale to wholesaler, wholesaler will show a sale to distributor, distributor will show a sale to manufacturer. So instead of anybody raising credit note, because then all would have to raise a credit note on their customer, if that is very difficult, and actually it is very difficult, so the other option is given is let the customer return it back to you by raising a sales invoice, so that he will raise a sales invoice. The GST he will charge, you can take as ITC. Again, you can raise a sales invoice on your previous supply. You will charge GST, he will take ITC, and this is how the goods will come back to the manufacturer. So the wholesaler, manufacturer, as the case may be, who is a recipient of such return supply shall be eligible to avail ITC of the tax levied on the said return supply, subject to fulfillment of conditions of 16, which is we are assuming will be fulfilled. So goods will be coming back in the chain to the manufacturer, and everyone would be charging GST on their sale. Now, actually it is a return, but they are showing it as a sales made by them, and they will charge GST. The opposite person will take ITC. Now, finally, the goods have come back to the manufacturer, and the GST what was there on original sale has also come back because they have shown you as a return sale. Now the goods are with manufacturer, and the manufacturer is also sitting with the ITC on these goods. Now he is going to destroy. What will happen? When the goods written by retailer, wholesaler as fresh supply are destroyed by the manufacturer, she is required to reverse the ITC availed on the return supply under 17(5)(h). So whenever these goods will come back, so the first question, how they will come back, they are saying credit note. If that is not possible or feasible, you can show it as a sale. And through this, the GST ITC will come back to the manufacturer. And when he will destroy the goods, which he is required to destroy as per the terms, he will reverse the ITC. Fine, students? Okay. Then comes, if any tax is paid in fraud cases or on detention, confiscation of goods, etc., ITC would be blocked. So wherever any tax get paid after the goods are detained. Now, actually, this 129, 130 has been removed because in 129 and 30, we don't pay tax, we are paying penalty. So actually, this section has been deleted. It is now only 74. Fine. So tax paid under section 74 is not available as ITC because 74 is a section where assessment is done for fraud cases. So if fraud cases are detected and any ITC is paid, any GST is paid on that, ITC for such fraud cases will not be available. Okay. Then comes the next point. Again, a circular dealing with what? Clarification in respect of entitlement of ITC by insurance company on expenses incurred for repair of motor vehicle in case of reimbursement mode of insurance claim settlement. Now, what is this? So I'm an insurance company. I have insured your motor vehicle. Now, if some damage happens to the motor vehicle, I'm supposed to get it repaired or whatever charges are there. So since you have taken insurance, let us say your car
meets with an accident, or there is some dash that the car makes because of which the bonnet gets dent. So you send it to the garage, and whatever will be the repair charges, I have to bear it because that is what the insurance I have given to you. Now, in such cases, the question is, what about the ITC? ITC of what? Of this garage bill, because the garage person who's going to repair this vehicle will charge GST on the expenses of repairs and maintenance. And for this GST, whether I as insurance company will get the ITC. That is what is the question. So what does the clarification says? Insurance company accounts for repair liability and is responsible for making payment of approved repair charges to the garage. Invoices are generally issued by the garage in the name of insurance company. Under reimbursement mode of claim settlement, the insured, that is you, whose vehicle has met with an accident, avails repair services from non-network garages with which the insurance company do not have routine business relation. The said garage issue the invoice in the name of the insurance company while not extending credit facility for the repair cost. Accordingly, the policyholder insured makes payment of such repair charges, and subsequently the insurance company reimburses the approved claim. So one possibility is you have taken your car to a garage with whom the insurance company does not have a tie-up. So you take it to here see the word uses some non-network garage. That is where the insurance company is not having a tie-up. In this case, what will happen? The garage person, whatever GST they are charging, they will collect the payment from you. That is, they will collect it from you, and then you will finally send the bill to me and I will make reimbursement of that payment. First possibility. Second, accordingly, this has happened. Further, irrespective of the fact that the payment of repair charges to the garage is first made by the insured, which is then reimbursed by the company to the insured to the extent of the approved claim. The liability to pay for the repair service for the approved claim lies with the insurance company, and thus the same is covered in the definition of recipient. Now, we all know this. Who is recipient? Recipient is the person who is liable to pay. So, in any case, whether the repairs is done by an approved or a network garage or by a non-network garage, if the invoice is in the name of the insurance company, it becomes a liability of the insurance company, and hence the insurance company becomes the recipient. Now, availment of ITC on motor vehicle repair. Now, this is the main question. We just studied at the start 17.5A, 17.5AB, and all those provisions. The question was if there is any insurance or repairs of any motor vehicle, it is blocked. But if you remember, over there, the general exception was where this inward service of motor vehicle insurance, motor vehicle repairs is going to be your outward supply also. In that particular case, you will be allowed ITC. Now, either the same service may be your outward supply, or it may be part of some composite service, which is your outward supply in any case. So as I gave you the golden rule, where any of these inputs are used by you for making your outward supply on or for earning money, that is my simple point, you will be allowed ITC. Now here, as an insurance company, whatever is the repair charges paid to the garage becomes my inward service. And I have already given you the insurance, which is my taxable outward supply. Now the question is, whatever GST is charged on this garage service for repairing your vehicle, whether ITC is available. So what it says, Section 17.5 provides that ITC in respect of servicing of repairs of motor vehicle is available where received by a taxable person engaged in the supply of outward service of insurance, which I am. Accordingly, it is clarified that ITC is available to insurance company in respect of motor vehicle repair expenses incurred by them in case of reimbursement mode of claim settlement. Following issues have been clarified. So in this, the clarification simply is that where insurance company is going to reimburse you the claim amount, insurance company is going to get ITC. Now here the possibilities, it is reimbursing 100% claim amount or it is reimbursing part of the claim amount. So let us say your garage bill is 10,000, I am reimbursing 10,000. Second possibility, your garage bill is 10,000, but I am reimbursing only 8,000. So they have clarified both that in either case, as an insurance company, I will get the ITC, but how much
I will get ITC to the extent I have reimbursed. So where I have reimbursed 100%, I'll get 100% ITC. Where I have reimbursed 80%, I'll get 80% of the ITC. Now, whether ITC is available to the insurer if invoice for vehicle repair is not in the insurance company. Now, this is a very interesting scenario. You get it repaired from some outside person and you take the invoice in your own name and then send it to insurance company for reimbursement. In this case, where the insurance company is reimbursing you the amount of the repairs, in that case, insurance company unfortunately will not be getting the ITC of the repair cost. Why? Because the invoice given by the garage is not in the name of insurance company. So if the invoice is not in insurance company's name, insurance company will not get the ITC. So this is the only challenge, that you have to comply with all the conditions of section 16. And one most important condition is the invoice should come in the name, in your name. And second, the supplier should upload it in his GSTR1, which is auto-populated in my GSTR 2A 2B. If this does not happen, credit cannot be taken. So these are the various aspects of section 17(5). Now, we come to the third category of section, which is section 18. The heading given is credit in special circumstances. And if you remember, at the start of this topic of ITC, I had called this as your sibling section. So mother section was 16, which was very kind. It was allowing you credit by putting some conditions. 17 was very strict, like your dad, which was putting restrictions. Either it was completely blocking the credit, saying that no credit, or it was giving credit but proportionately. Third is 18, which is like your sibling, like your brother, sister, which says that, okay, I will allow you credit in some special cases, or I will take away your credit in some particular cases. So section 18 has many different parts. We'll first discuss first 4 parts. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So these first 5 subsections we'll discuss along with the applicable rules, and then we'll go to the other subsection. Now, we start with the first 4 subsections along with the relevant rule. Now, what are these first 4 subsections dealing with? Out of these first 4, first 2 are allowing you credit in a particular scenario, and the other 2 are taking away the credit from you. So as I mentioned at the start, it is like your very kind elder sister who is so kind that she's saying, okay, don't worry, take my piece of cake. So first 2 subsections are like your elder sister who are giving you credit. The other 2 subsections are like your naughty younger brother who is even taking away your piece of cake. That is, it is taking away the credit that you're already having. Now, what are these subsections and in what scenarios they are either giving you or taking away the credit? Let us understand. Now, pay attention. 4 scenarios are covered in these 2 subsections. You are unregistered and you get registered. Again, you are unregistered, you get registered. You are composition dealer registered, you become regular registered dealer. And last, you are engaged in exempt supply, now your supplies become taxable. So what are the 4 scenarios? First 2, unregistered to registered, then composition to regular, and then exempt to taxable. Now in these 4, somebody will ask, sir, why 2 scenarios separately for the same case? One is compulsory registration, one is voluntary registration. So compulsory is where your turnover crosses the limit or you are falling in section 24 list where registration is made compulsory. Next, where nothing of the compulsory registration happens, you yourself decide to get registered, which is voluntary registration. So 2 cases, you are unregistered, you are becoming registered. Third case, you are registered but as a composition dealer, now you switch to regular dealer.
Fourth case, you are registered, but you are engaged in supply of exempt items. Now you are switching because means now the exemption is withdrawn, so your supplies become taxable. Now, in all these four scenarios, firstly, let us discuss what is common. The common point is that when you are in this four categories, unregistered, composition, or fully exempt, you were not getting the ITC of whatever inputs you had purchased. Why you are not getting ITC? Because if your outward is exempt, or your composition, or you are unregistered, in any case, ITC is not available. So let us take this case. Till date, till today, you are unregistered, or you are a composition dealer, or your goods or services are fully exempt. So till today, whatever purchases you have made is not eligible for ITC. Now let us say this 55th council meeting had happened and it had made your goods services taxable effective from tomorrow. Or let us say you decide to take registration and from tomorrow you are registered. Or your turnover crosses the limit which makes you compulsorily switch from composition to regular. Or you have made some interstate supply because of which you compulsorily switch from composition to regular. So in any of these scenarios, what is happening till today, you are unregistered or composition dealer or exempt good service supplier. From tomorrow, your category changes. You become registered or you become a regular dealer or your goods services become taxable from tomorrow. Not tomorrow. Sorry. Sorry. Tomorrow onwards, whatever purchases you are going to make, you will get ITC. Till today, whatever purchases you made, no ITC. So this is clear. Now, what does 18 deals with? 18 deals with whatever you purchased till today, for which you did not receive ITC, but it is lying in stock. And if it is lying in stock today, obviously you will be using it tomorrow onwards. And from tomorrow onwards, you are eligible for ITC. But since this stock was purchased till today, you did not take ITC because you are not eligible to take ITC. Now, logically, this stock on which you have not taken ITC, if you are utilizing it tomorrow onwards in your outward supply, then those outward supplies are taxable. Hence, you should get the ITC. But till date, you did not take ITC because you are not eligible. Now, for taking the ITC on these goods which are lying in your stock, Section 18(1) and 2 says that we will give you the mechanism, and the mechanism is mentioned in Rule 40, whereby whatever ITC is lying or which is there in this particular stock, which is lying with you, I will allow you to take that ITC using a particular form. That is what is Section 18 bracket 1 bracket 2, that till date, whatever you purchased did not take ITC, but that stock is lying with you. No worries. Tomorrow onwards, when you become a taxable person, you are going to pay GST on your outward supplies in all these four scenarios. Do one thing, take the ITC of this stock. How? That will be provided in Rule 40, and there are some conditions or some requirements put in the section that we are going to study. So firstly, have you understood what 18(1) and 2 is going to do? It is going to give you the ITC which you till date did not take because you are not eligible. Any questions? Okay. Anyone says no question.
Anybody else? Everybody understood? Everybody understood? Now, see what is given. Now, I gave you 4 scenarios. See the 4 scenarios. First, person who applied for registration within 30 days from the date on which he becomes liable. So this is compulsory registration. Second, person who is not required but gets registration. This is voluntary. Second, person who ceases to pay composition tax and switches to regular. And third, person whose exempt supplies becomes taxable. So these are the 4 scenarios. Now, common point is what? Whatever inputs you are having in stock, inputs, 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 inputs. So common point is whatever inputs you are having in stock when the day immediately preceding the date of registration, the day immediately preceding you become liable for paying tax, the day immediately preceding the day when your supplies become taxable, that is today. Today, whatever is your closing stock, this particular closing stock, whatever GST you had paid on their purchases, which you did not take as ITC, now we will allow you ITC. What is the condition? ITC to be availed within 1 year from the date of issue of tax invoice by the supplier. In other words, this stock should not be more than 1 year old. So this stock should not be more than 1 year old. Then see the condition of 1 year is there, correct? Now, so the common point in all the 4 scenarios is inputs are lying in stock. Now, what is the uncommon point, which is not present in the first 2 cases, but present in the third and fourth case? As you can see, first 2 cases only allow you for inputs. Third and fourth allow you for inputs as well as for capital goods. So this is the uncommon part between all the 4 scenarios. First 2 only allow for inputs. Other 2, that is third and fourth, allow for input as well as on capital goods. Now, this is what I think whose question I was answering. I think Mitali or Mansha's question, that this is where the law says use the 5-year rule for capital assets. Now, in this case, let me give you an example. Let us say I was working as a composition dealer for 2 years, and after 2 years, now I am becoming a regular dealer. Or I was making exempt supplies for 2 years, and now I am going to make taxable supplies because from tomorrow my goods services are becoming taxable. Now, in this particular case, what does the point says? ITC on capital goods will be reduced by 5% per quarter of a year or part of the year from the date of invoice. In short, they are treating the life of my capital goods as 5 years. So firstly, I'll explain you in simple manner, then I'll go by the technical point. If the life of my capital goods is 5 years, already 2 years I have used as a composition dealer or as an exempt goods supplier for which ITC was not available. But now remaining 3 years, I am going to use these capital goods for making taxable outward supplies. Hence, I should get the proportionate 3 years ITC. So in a very simple manner, how it should be done? If I've used my capital goods for 2 years, divide the total ITC by 5 years, multiplied by 3 years. Whatever proportion amount comes, you can take the ITC. This is in a very generic way. But this is not how it is given because I may not have used the goods for complete 2 years before I am switching. So instead of yearly calculation, they have given quarterly calculation. Now see, this same 5 years, if converted into months, it will become 60 months. We saw this logic in Rule 43 reversal. We were dividing the total ITC of capital goods by 60 months to find out the per month ITC, correct? So it was based on the 5-year period rule for capital goods. Now the same 5-year period rule is now converted into quarterly rule. How? Here they are saying for each quarter, we presume that the out of total ITC of the capital goods, how much ITC is applicable for 1 quarter? 5%. Now 5% for 1 quarter. So in a year, there are 4 quarters. So how much it will become? It will become 20%. So first year 20, 20, 20, 20, 20. In 5 years, it will become 100%. So same 5-year rule
converted into quarters. Now, I had purchased the capital asset 2 years back. At that time, the GST paid on the capital asset was rupees 1 lakh. But I could not take ITC because the capital goods were used either as a composition dealer or for making exempt supplies, for which in either case ITC is not allowed. Now, after 2 years, I am bringing the capital goods. Bringing means it is with me only. I am switching from composition to regular or from exempt to taxable. What I will do is every quarter I will take 5%. So 5%, 5%, 5%, 1 year, 20%. Similarly, 5%, 5%, 5%, 5%, second year also 20%. So total 40%. Now, 1 lakh was the total ITC of capital goods which I had not taken. Out of 1 lakh, I will subtract this 40%, which is applicable to 2 years. How much is left? 60%, which is applicable for remaining 3 years, which comes to 60,000. Correct? So this is the rule. I hope you all have understood this. So whatever stock is lying in my godown or stock lying with me of inputs, and in third and fourth cases, even if I have any capital goods lying with me, for that I will be eligible to take ITC under section 18(1), (2), (3), (4) section. Now, how this would be taken? For this, so rule 40 is there. I don't know where they have given. I think here only they should have given. They are saying, what does rule 40 says? You have to file a form. The form is ITC 02 form. And using this ITC 02 form, you will declare your stock in that, you will declare this capital goods in that. And on that basis, you will get the ITC. Now, for this, the time limit given for filing this declaration, etc., is 30 days, which may be extended by the commissioner by showing some eligible costs. And where the ITC that you want to take as per all this stock and capital goods working is exceeding rupees 2 lakhs, then you need to get a certificate from a chartered accountant or a cost accountant that the calculation of ITC is correct. Now, as we saw, you have these two sections for shifting from non-taxable to taxable or unregistered to registered or from composition to regular. Similarly, subsection 4 deals with the other scenario where you shift from here to here. So now you are registered, you become unregistered. You are regular, you switch to composition. Your goods services are taxable, but this GST council meeting says that they will be exempt and notification is issued that from tomorrow, your goods services are exempt. Now, in all these cases, when you are shifting from taxable to exempt or from regular to composition or from registered to unregistered, exactly opposite has to be done. What has to be done? Now, whatever ITC you had taken till date and whatever stock is lying in your godown or whatever capital goods are lying in your godown, you have to find out the ITC on that. And now you have to reverse the ITC because you are switching from taxable to exempt, from regular to composition, or from registered to unregistered. So whatever ITC is lying with you, you have to reverse it. Now for inputs, you will reverse the full ITC. For capital goods, again, you will take the useful life as 5 years and accordingly you will find out the proportionate ITC. For whatever life you have used the asset, you will keep that ITC. Excess, you have to reverse. This is what is given in 18(4), read with rule 44. Now for reversing this, what you will do, whatever amount you have calculated, you will debit it in your electronic credit ledger. So if you have balance in your ITC, use this balance for paying off this ITC reversal. If you do not have sufficient balance, then the balance reversal will be done from your cash ledger. It means if ITC balance is there, you can use ITC balance for doing this reversal. If ITC balance is falling short, then for remaining, you have to use the cash ledger for doing this reversal.
Now, after all this reversal, if still some ITC is lying in your credit ledger because you had excess ITC, the ITC will lapse. So if balance is remaining in ITC, you have to write it off. Next, cancellation of registration also requires reversal of ITC on inputs held in stock containing semi-finished goods, finished goods held in stock, capital goods, plant machinery on the day immediately preceding cancellation date. The amount to be reversed on inputs, capital goods is computed in the manner as applicable for subsection 4 and 6 of section 18. So 4 we have already studied about it, 6 we are going to study. Such amount is then compared with the output tax payable on such goods, and the higher of the two amount is finally paid. So what they are saying, if you are canceling your registration and now you are selling off the goods, so you are not continuing your business. Many times when we cancel the registration, when we are discontinuing the business, in such a case, what you have to pay is higher of the two amounts. One, the amount which we just calculated of ITC, or since you are selling it, you will be getting some money on its sale. You have to compute the GST on that. So either the ITC reversal amount or the GST on the sale, whichever is higher, that is what you have to finally pay. Correct? Next, ITC reverse, whatever calculation we have just understood, in case of inputs or capital goods, is calculated separately for each CSI. So you have to do it headwise for each category of ITC. You have to do the calculation separately, and the reversal amount, whatever we found, is added in your output liability of that particular month. So whatever reversal amount came of inputs or whatever proportion amount came of capital goods, you will add it to your output liability, and automatically it gets added to output liability. So when you are filing your GSTR 3B returns, this will become your liability, and automatically for paying off this liability, it will be adjusting it from the ITC ledger to the extent balance is there. And if the balance is exhausted, automatically you pay it in cash. So this is about either from non-taxable to taxable or from taxable to non-taxable. Is this clear to all students? Good. So this is what is in the first 4 subsections of section 18. Correct? Now we stop over here. In our next lecture, we will deal with the further subsections of section 18, but dealing with some other case scenarios and the relevant rules for the same. Correct? Yes, Mansa. So connect, we will discuss on that. Don't worry. Sure. Okay then, students. Thank you very much for today. That was a very insightful session, a good discussion we had today. So keep sharing your thoughts, your queries, so that we can have more fruitful and more engaging discussions. Fine. So that's it all from my side. Thank you very much. Keep studying so that you can come up with more queries in the next session. Thank Fine. you, sir. Thank you, Bida. Thank you very much. Bye-bye.